All right. Good evening, everyone. Hope everyone is doing good. I hope I am audible. Okay, we will start. We will wait for 1 minute and then we will start. Okay, so I will be sharing my screen. All right, so we will start from where we have left yesterday. All right, so let's wait for a while. Okay, we'll wait for another 30 seconds and then we will start. If you can see the screen and you can see, am I audible? Just say yes. Okay, I can let me know if you can see the ping request. All right, on the screen. Okay, so let's begin. So yesterday we have covered the host, right? How we can create objects with host, with IP address, network, IP range, then IP list. We have also looked into MAC, how to create object with MAC address, that is the system address, or might be the any type of system MAC address that we have to give access to allow from the firewall rule. Also, we have looked into the various hosts like service, then country host are the default one. So now today, whatever we have discussed yesterday, we will go through in our lab. All right. So we are on the lab. So you can, so let's say we have this topology. We have head office and branch office. So let's walk through the head office first. We have this PC. I have clicked there and I'm on the PC right now. So let me log into the firewall. If I just change, let me change the settings. If I go to property, font, and let me just make it large. Okay, so I can see I can reach the firewall. All right. Let me just log into the firewall. All right, so let me show you the settings of this system. Okay, so if I say ipconfig/all. Okay, once you execute the command, you will see the details for the Ethernet adapter. So the IP address of the system is 172.16.1600. All right, and the subnet mask is 24. Gateway is our firewall, 172.16.16.16. And we have configured the static IP on this PC. Okay, no DHCP, but yes, of course, DHCP is running on the firewall. So we will change that and we will see how the client send the request and we accept the request and the DHCP goes on. All right. Okay. So this is the settings on the system. I can ping firewall. So always make sure you are reachable the firewall. All right. If I telnet 172.16.16.16.4444, the default port of Sophos Firewall. If I press enter, if that let you in, agar आप telnet कर सकते हो, that means you are in the firewall. All right, that is working one. Okay. So you know the IP address of the firewall. You know the system or IP address of the firewall. Okay, the same way
the branch office has 172.16.16.17 and 16. Okay, and system IP is 172.16.17.100. So we will also do some connectivity test today. All right, let me just log into the firewall quickly. So you can log into your admin account. Okay, so I hope everyone can see the GUI, right? So it will be being loaded. Okay, so you have to wait for a while. Now, जब पहली बार आप Sophos Firewall पे login करते हो, all right? Once you have the access to the firewall, lab पे रहेगा. Okay, so you don't have to worry about the rest of the firewalls if you don't have the access. Or if you are already working with Sophos Firewall and you don't have the necessary rights, अगर आपके पास rights नहीं है, you might have received rights from might be from senior. So you don't have to worry. Now you will be having full admin access. All right, you will have all the access or to all the functionalities. If you would like to make any changes, if you like to test some configuration, you can do it here on the lab. So you will have full access here. So once you log in, what you will see now? All right, so you will see a lot of details. Currently, I can see the system. I can see interface, there are having some performance issue. Okay, it is not in green, let's say. I can see services and VPN are running properly. So we are on the control center. So we are looking into the control center. This is the quick recap what we have gone through on the theory part. Okay, so we are now looking into the practical part. All right, so we have already registered the firewall. All right, so how we can register the firewall, how we can take the access of the firewall, that we have already done on the last session, where the default IP is 172.16.16.16. Okay, so 172.16.16.0/24 is your network on port A. तो आपको जब भी firewall का आपके पास virtual firewall हो या फिर hardware firewall हो, you have to can access the firewall without any specific management port, because जो doubts थे इस हिसाब से, तो you can directly have the access of the firewall. आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट पीसी कनेक्ट करना है पोर्ट ए पे. ओके, एंड देन टेक द एक्सेस ऑफ द फायरवॉल. तो पीसी पे जैसे मैंने अभी आपको सेटिंग्स पता है, यू कैन कॉन्फ़िगर सेम सेटिंग्स ओके ऑन योर सिस्टम स्टैटिकली, राइट? सबको स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना तो पीसी पे आता ही है. So you can configure the IP and subnet mask and just make a ping. If that is reachable, that means you are reachable to the firewall, and then you can take the access of the GUI and follow the step. Let's first आपको password change करना है. Once you change the password, click on next. Then you have to click just follow the initial setup wizard. All right. If you that I will not be showing today, but you can watch the previous video. और अगर end of the session में भी अगर हमारा कोर्स फिनिश हो जाता है या फिर इन बिटवीन, हम वापस से वो स्टेप फॉलो कर लेंगे अगर किसी को कहीं पे भी वहाँ पे डाउट है तो. ऑलराइट, सो हम वापस उसको ऐसा होगा दूसरे टोपोलॉजी पे हम वापस फायरवॉल रजिस्टर्स करेंगे. बहुत सारी फायरवॉल्स हम रजिस्टर करेंगे, तो हमें रजिस्टर करना, कैसे एक्सेस करना है फायरवॉल को वेरी फर्स्ट टाइम, दैट विल नो. सो वी हैव रजिस्टर्ड द फायरवॉल. Once you have registered the firewall, you will have the access to the firewall, and this is the control center. अगर आपके पास हार्डवेयर डिवाइस होंगे, जब when you are working with the hardware device, physical device purchase किया होगा, then you will see the model number here. All right, let me just make it zoom for you. All right, so as it is virtual one, all right, we have unlimited cores, and we'll discuss about the cores और उसके भी licenses अलग होते हैं. So we'll discuss about license, which license you should purchase, all right, for 1 year, 2 year, and 3 year. What are different type of bundles again. Also for the virtual, we have different licenses. So we'll discuss those licenses later on, but let's look into the firewall GUI and CLI as well as on the console access. All right, and we also will test some configuration. We will create the objects which we have studied last. So what you can see here is first you will see the model number always here under control center and the firmware version. All right, and then you will see the appliance key. So this will help
ये आपको कब काम आएगा? लेट्स से इफ यू वांट टू, यू आर फेसिंग सम इशू, और आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन, you did it right but it's not working maybe. Okay, so you might be asked about your existing firewall details. तो आपके फाइवल की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कौन से फाइवल पे काम कर रहे हैं, सो दैट हम वो कन्वे कर सकते हैं. ऑलराइट, सो द मॉडल नंबर इज इम्पोर्टेंट एंड द फर्मवेयर इज इम्पोर्टेंट. Appliance key you don't need to share until and unless the support is asking you. All right, so every firewall vendor has its support center, right? So in that case only you have to share your appliance key number, or otherwise just share the model number and the current firmware version that you are working on. So current firmware कौन सा होगा जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा. अभी कौन सा firmware version है? Sophos OS, okay, FS OS 19.5.1 MR1. All right, and it is built is 273. Okay, so these are the maintenance release. Okay, these are the firmware versions, and what type of improvement they have. So we'll discuss about the firmware version also in upcoming modules in details. What are the release notes, what they have resolved, what are the known issue on all right, which issues has resolved from Sophos, and if we have any bug or so we will discuss about the firmware also. So this is the we can say stable one, so we don't have to worry about the fix. If it is not working, yes, of course we have latest firmware version MR3.MR. MR3 is the latest one. All right, so we have 2 and 3, so 2 firmwares they have released. So we'll discuss about what issue they have released, what issues they have fixed on the firmware version on the release note. तो आपको अलग से एक रिलीज नोट मिलेगा, उसमें कौन से अब तक के जो इश्यूज होते हैं, जो बग्स होते हैं, वो रिजॉल्व किए हैं. एंड देयर आर मेनी मच मोर डिटेल्स इन दी firmware that they have fixed. So this is about the firmware till now. All right, so सबसे best when you are working with firewall, जब भी आप Sophos से काम कर रहे हो, whenever you are working, always have a good habit to take the backup. All right, so to take the backup, you should always set automatic backup to your mail, so you don't have to manually download the backup and worry about that whether you have a backup or not. All right, the latest backup. तो हमेशा बैकअप जब भी आप कोई मेजर चेंज कर रहे हो या फिर कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन है एग्जिस्टिंग फायरवॉल पे, so always have a first verify whether when was the last backup was taken, so that let's say you are doing any, if let's say yesterday we want to change the port, right? So better we take the backup before making this major change, so that we know that what was the last change, kaun sa change humne kiya. Okay, so we'll set automatic backup on the email, or if you have FTP server, we can send it to your FTP server. FTP सर्वर पे भी हम मेल्स रेगुलर इंटरवल पे स्केड्यूल कर सकते हैं, ईमेल पे भी करेंगे, एंड we will download local also, so we will get the idea how we can take the backup, and also we will restore the backup, so that we know the procedure for taking the backup and restoring the backup on the firewall. So let's say if your firewall, अगर आपका firewall okay factory report हो जाता है सारी configuration, any reason it has been reset, all right, might be some human error, so let's say, so we can restore the backup if we have the last backup that we have received on the email as per the schedule. तो हम schedule करेंगे, we don't have to worry that whether we have received the backup or not, so it will automatically reflect in the mail and we will see the details. So we'll see that. Next would be the system. We can see system details, traffic inside graph. What are the web activities going on? If I'm accessing any cloud application, so you can you will be able to see here. So I think 3 app has got detected, so we will see what is sanction, unsanction, tolerate. So let's say you have Office 365 or the cloud application, well, it will get detected here. वो detect यहाँ पे होगी और उसको हम categorize कर सकते हैं, right? ऐसी applications जो cloud पे hosted है और categorize नहीं है, उसको हम कैटेगराइज करेंगे. बाय डिफॉल्ट वो कैटेगराइज हो ही जाती है, ऑटोमेटेड है, बट इन केस इफ दे आर नॉट गेटिंग डिटेक्टेड वी कैन मैन्युअली categorize those application. And also
we can give bandwidth, let's say 5 Mbps, 10 Mbps of dedicated bandwidth, upload, download. So we'll see about the profile. कल हमने profile page रहा था, where that will come on the next page. तो उस पे हम bandwidth भी apply कर सकते हैं and so on. So we can have a quick look from here. Okay, let's say if I click on performance, so it will give me more detail, right? कल हमने पढ़ा था, if you just click there, you will get more details inside from the dashboard or the control center. So we'll call it control center only from here. So you can see the performance graph. You will see the which services, if any of the services are not running, it will get displayed here, but all the services are running. That is the reason we will not able to see any of the dead service or stop service and so on. So we'll वैसे भी हम इस पर काम करने वाला है, right? So it might happen that some service will get stopped or dead. So we will take some step in that case. What would the step we can take? Like, let's say we can restart those services and we can make them up and running. We can see interfaces. Let's say, yes, I can see why interface performance is low because my MPLS link is down. Okay, rest are up, but yes, the link which is down, it will show here. Okay, VPN, there is no VPN, so no VPN is being configured. Okay, कोई भी VPN हमने configure नहीं किया, that is the reason it is showing no VPN links. But अगर हमने VPN configure किया है, all right, तो एक टनल है या फिर एक से ज्यादा टनल है, ठीक है? Let's say हमारे पास 3 टनल्स हैं और 4 टनल्स हैं यहाँ पे. अगर कोई भी डाउन होएगा, then we will see this detail here. All right, so it will give you the system. You can see these are the system details which I click there and I got more details. Okay, और भी बहुत detail मिलेगी, but this would be from your dashboard. पूरा insight लेंगे यहाँ पे. All right, so yes, let me just click on CPU and memory. So similarly, we can get details of the CPU and memory graph here. Right, let's say अगर कोई ऐसा होता है, right? Let's say CPU high जा रहा है, so we'll find out what would the reason for getting high CPU, high memory, and so on. Right? अभी तो normal है, so it's fine. But yes, of course, advanced troubleshoot में हम यही सब करेंगे कि system को ही monitor करेंगे. Let's say CPU and memory, what are the reasons if they are getting high, and what are the other steps that we can take to slow down the CPU usage, right? Or हो सकता है maybe previous bugs भी होते हैं, right? So we will fix with the latest firmware version might be causing the issue. Verify करेंगे कौन से services क्यों high ले रही है. We might restart the services and so on. These are the advanced troubleshoot step that will take this later on. But completely we will be focusing first on the navigations, configurations के parameters कौन सी configurations हमें यहाँ पे करनी है. We will verify the traffic flow. We will do the basic configuration and the advanced configuration, and then we will troubleshoot and monitor the firewall. Okay. So you can see system graphs. I will not click here as of now. You can see log viewer. These are the options available for your troubleshoot. Whenever you want, जब आप troubleshoot करते हो, कोई system slow चल रहा है, right? जैसे Windows slow चलता है, you will look into the task manager. Similarly, we have the system. So you can see the system details from the control center. Also, we can do under diagnostics. We can check the log viewer. We can check the CLI console. Logs देखेंगे कि what is the root cause for causing CPU high and memory high. All right, right now I can see it is normal, so we don't have to worry about right now. Next is ping utilities. Let's say if you are troubleshooting something, you want to check some test connectivity, ping check करना है, trace route करना है, or an NS lookup, route lookup करना है. We can do it from here as well as from the diagnostic. All right. So ये जो हम click करते हैं तो ये यहाँ पे redirect कर देगा. All right. We will see that. Okay. Let me click on network there. All right. So I can see network details, live logs. Okay. So this will be the bandwidth on the network, so you can see what are the traffic going on, how many sessions are running on the firewall. Heartbeat would be if we have Sophos endpoint. Okay, so if you don't see anything here, that means you don't have Sophos intercept X. Okay, so intercept X generally अगर मैं short में आपको बोलूँ वो antivirus. Okay, endpoint है Sophos के.
So if you are running Sophos endpoints, if there are some system which are at risk, or if there is malware has been found or compromised, you will see the details here. So you have to log into the Sophos Central and you have to troubleshoot from Sophos Central and from the system end. So we'll see how synchronous security works between Sophos Central and firewall and the endpoints to secure your network. All right. Advanced threat protection. If anything has been detected by advanced threat protection engine, if any threat has been detected, you will get the count, everything here. So हम scan करेंगे. We will download the virus purposely. We will also download the ransomware, and we will see whether firewall and the endpoints is protecting our system or not. Right, so as of now we have not tested, and it is कोई भी ऐसी malicious website visit नहीं की है. That's the reason we are not getting much more detail. Also अभी हम scan नहीं कर रहे हैं, right? Traffic वो नहीं कर रहे, वो भी मैं अभी हम आगे आते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे red remote Ethernet device. If I type Sophos red, okay, so let's go to the red first. If I click on the images, ओके, सो जो रेड डिवाइस है आपके, ठीक है, वो कैसे रहेंगे? सोफोस के रेड डिवाइस कौन से होते हैं? सो देर आर 2 to 3 models are available. You can see the detail, I think, on the website. Let's click, go there. So what are red? Okay, remote Ethernet devices. Okay, let me just go to the website. I'm on the document part, no worries. सो रेड क्या था, मैंने जो लास्ट बताया था, जो हमारा रिमोट ब्रांच ऑफिस होगा. इफ वी हैव वेरी स्मॉल ऑफिस एंड इफ यू वांट, इफ और देयर आर लेस नंबर ऑफ यूजर्स, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, अगर हेड ऑफिस से कनेक्ट करना है ब्रांच ऑफिस, राइट, तो फायरवॉल की जगह पे हम रेड भी यूज कर सकते हैं फॉर सिक्योरिंग दी ब्रांच ऑफिस. अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, लेट्स से 15-20, बहुत सारी ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, देन यू विल सी द काउंट हियर. अगर कोई disconnect है, issue है, then you will see the count here. You can click there and you can fix the connectivity. All right, so we'll see that. Configure red configure करना है तो करेंगे यहाँ पे. Okay, we will see the alerts. Let's say I can see the new firmware is available to download. IPS is turned off. All right, so हाँ, IPS तो turned off रखा है मैंने, अभी ये on नहीं किया. We will, because this is the fresh. Okay, we will configure the IPS policy later on once we are in the module. So currently it is off. That is the reason it is showing you the IPS off. अगर आपने secure storage master key set नहीं किया, you will get the alert. You will get like click here to set the secure storage master key. Immediately आपको उसको सेट करना है, राइट, उसको सिक्योरली, एक मींस पासवर्ड देना है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट सिक्योर स्टोरेज की. ओके, अच्छा, उस वो किस लिए था? एनीवन, कोई किसी को याद है सिक्योर स्टोरेज मास्टर की किस लिए? शॉर्ट में कुछ भी याद है तो? व्हाई सिक्योर स्टोरेज मास्टर की इज सेट? बैकअप के लिए, बैकअप रिस्टोर. यस, फॉर रिस्टोरिंग द बैकअप. सो जब आप बैकअप रिस्टोर करोगे, इट विल आस्क यू फॉर द सेम password. Okay, then it will go ahead. Otherwise it will know, it for the security reasons it will not restore the backup जहाँ पे आप restore कर रहे हो. All right, so next would be connections and interfaces. So यहाँ पे आपको और details मिल जाएगी, like you can quickly have a look here. Okay, as this is your control center, you have to monitor your firewall. So control center, so you can see the gateway interface details. अगर कुछ भी down होगा, then you will see the details here. All right, so अगर WAN है, you will see like active, right, those जो भी WAN zone होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा. So I have 3 WAN zones. Okay, one is MPLS, 2 ISPs. हम और एक MPLS ऐड करेंगे, alright, for the failover. And we have already हमारे पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है, तो दोनों को लोड बैलेंस भी करेंगे, देखेंगे, फिर एक पर्टिकुलर यूजर का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर आईएसपी से जाने देंगे, पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन वॉइस ट्रैफिक है वो भी हम पर्टिकुलर आईएसपी 1 से 2 से जाने देंगे. जैसे हमें
route करना है. All right, we will configure another ISP also, and to see what is active and active backup states, how we can load balance the traffic, how we can कैसे हम एक पर्टिकुलर आईएसपी से राउट करेंगे ट्रैफिक. ऑलराइट, सब यहाँ पे करेंगे. सिमिलरली इस दोनों आईएसपी से हम आईपीसेक वीपीएन भी कॉन्फ़िगर करेंगे. यानी आईपीसेक क्या होगा, हमारा हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर कनेक्टिविटी, so that we can ping the PC. Right now no PC is connected, so the destination IP जो सामने मेरे ब्रांच ऑफिस का IP है वो कौन सा है, 172.16.17.100 है. Okay, so right now I will not able to ping because कोई connectivity setup नहीं किया हुआ है. All right, MPLS, yes, of course I have tested many things, everything is working, but we will not go. We will go for step by steps. Okay, so right now it should pass from this, but right now it is down. All right, मैंने lab पे इसको on ही नहीं किया. That is the reason. So we will see that. Okay, and also we will see अगर दोनों MPLS फेल हो रहा है तो हम उसको IPsec पे मूव करेंगे. And we can set whether कौन सी प्रायोरिटी किस पे रखना है, IPsec पे रखना है या फिर MPLS पे रखना है. ओके, क्या रखना है, ट्रैफिक फॉर द कनेक्टिविटी बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच ऑफिस के बीच में. Alright, and rest you can just scroll and you can see more details on the interface and connections. You can see port A, B, C. Every port is available which are जो भी आपको status होगा जैसे मेरे connected है, you can see some traffic is getting forwarded. Alright, you might see in real life scenario you will see more traffic here, but this is a lab, so it will be in bytes. Okay, so we will discuss about bytes, kilobytes, क्योंकि जब हम we will configure the profiles here. Okay, then we will apply the bandwidth policy like 1 Mbps, 2 Mbps, or 60 kbps. It depends on the requirement and type of bandwidth that we have to apply on the users or to your higher end users, let's say the directors, or to your servers and so on. So we'll use that also later on. Next is TLS and SSL and TLS inception. So we will decrypt the traffic. All right, so हम जो Sophos firewall है उसको हम कैसे यूज करेंगे, मैन इन द मिडल अटैक. यानी जो भी ट्रैफिक हमारा इंटरनेट से आएगा, ऑलराइट, लेट्स से देयर इज इंटरनेट एंड देयर इज अ पीसी, यूजर पीसी, तो बीच में हम रहेंगे. ठीक है, एंड वी विल स्कैन ईच एंड एवरी traffic that is being accessed by the users. So जो request आती है कैसे आती है, TLS, I hope everyone is knowing about the TLS SSL protocol. All right, so that will not be the part of the course because it would be another session, might require 2 to 3 hours to discuss all this basic of this protocol. But in short, हम क्या करेंगे यहाँ पे, scan करेंगे, we'll see in action. Generally, it is used for encrypting the traffic between your the client browser and the PC. जो हमारा let's say Google access करते हैं, right? तो जब कम्युनिकेशन होता है तो सिक्योर होता है, राइट? सिक्योर होता है, ऑथेंटिकेट होता है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रिटी रहती है, एंड सो ऑन. दीज आर द फीचर्स ऑफ द TLS. बट एज अ फावल, जब फावल बीच में आता है तब क्या होता है, व्हेन वी स्कैन TLS. Alright, so as of now we will not see anything in much here, so we will go through which firewall has been encrypted and decrypted. तो हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट करेंगे, so हमको पता चलेगा किस यूजर ने कौन सी URL access की. All right, without scanning the SSL TLS traffic, you might not perform some task. तो अगर आप scan नहीं कर रहे हैं, that means you will not able to perform some task. Like अगर आपको कोई exe ब्लॉक करना है, कोई फाइल टाइप है, okay, कोई वेबसाइट में से डाउनलोड करे उसको ब्लॉक करना है, that then you have to scan the traffic for those websites. All right, so we will scan the traffic for a whole website so that we can get the details, and then later on we will get all the graphs for कौन सी website आपने encrypt किए, decrypt किए, and so on. So you will get the details here. Not only here, but there are other ways. This is the first way where you can just monitor the firewall through Control Central. ये troubleshoot के लिए तो नहीं है, but just need to, you can use this as well while doing the first step of troubleshoot. You can look into the dashboard first.
ऑफ कोर्स देन जब अगर कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, लेट्स से चल रहा था, देन नाउ इट्स नॉट वर्किंग, देन वी विल लुक इनटू द पैकेट कैप्चर देखेंगे, देन वी विल सी द लॉग व्यूअर एंड सो ऑन. ओके, नाउ लेट्स मी क्लिक ऑन कंट्रोल सेंटर. सो कल हमने जो उससे पहले रिवीजन किया था, राइट, सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस मेन menu where this is the control center where we get these details. उसको क्लिक करेंगे तो और डिटेल्स मिलेंगे, राइट. फॉर we'll talk about the user inside with the security heartbeat. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन भी करेंगे Sophos Intercept X. Okay, not today, but let's I will on the next class we will install the Sophos and antivirus. All right, and we'll see the feature called synchronous security provided by Sophos. राइट, और उसका यूज क्या है, क्या करेगा ये, वो तो मॉड्यूल पे और भी अलग से हमारा सेशन होगा, 2-3 दिन डिस्कस करेंगे अबाउट द सिक्योरिटी हार्टबीट एंड सिंक्रोनस एप्लीकेशन कंट्रोल थ्रू सोफोस इंटरसेप्ट एक्स. ओके, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पूरे टोपोलॉजी या फिर नेटवर्क को. सिमिलरली जीरो डे प्रोटेक्शन, अगर कोई फाइल यहाँ पे, लेट मी जस्ट स्क्रॉल हियर, आई थिंक यू कैन सी. ओके, जीरो डे प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, एंड अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया इट विल रीडायरेक्टेड टू हियर. ओके, यहाँ पे आ गया. सिमिलरली कोई भी आप क्लिक करोगे उस पे यहाँ पे नेविगेट ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेट्स से इफ द एनी फाइल आप स्कैन कर रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक, कोई EXE फाइल डाउनलोड की है, मैलिशियस है और या फिर सस्पिशियस है, जो भी स्टेटस होगा यू विल गेट द डिटेल हियर, एंड जो फाइल का जो सैंपल होगा वो सोफोस लैब पे ऑटोमेटिक जाएगा. ओके, एंड इट विल गेट स्कैन. इफ इट इज नॉट malicious देन इट यू कैन रिलीज दोस फाइल्स, ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा. सस्पिशियस में you might require the action to take. Malicious पे you know what to do. All right, so it depends on the अगर genuine है and still it is getting malware, then the action has to be taken very cautiously. All right, बहुत ध्यान से steps लेने, and then you have to allow it. Otherwise, security breach हो सकती है, even though your configuration is tight and secure. All right, so if we talk about कैसे वो चेक करेगा, right? Let me go to system and administration first. I'm okay, and I'm so sorry. Go to backup and firmware. All right, and we can see backup and storage. Okay, backup and restore. Let's just go through this one. So we have backup. बैकअप हम कैसे रखते हैं, लोकली ले सकते हैं. यहाँ पे अभी बैकअप नाउ करके इसकी बैकअप ले लेते हैं. लेट मी जस्ट टेक द बैकअप ऑफ दिस. सो लेट मी से हेड ऑफिस. ओके, यू कैन गिव योर नेम, आप प्रीफिक्स लगा सकते हो अपने हिसाब से. क्लिक ऑन अप्लाई. ओके, या, सो गिव द पासवर्ड. ओके, ये वाला पासवर्ड अलग रहेगा, एनक्रिप्शन पासवर्ड. सो यस, लेट मी जस्ट फर्स्ट सेट इट अप एंड सी द वर्किंग. 65 applied. Okay, so I will it will no worries, I don't, what if I don't want, no option, right? So let me just put some 65. All right, let me just click on apply. Okay, so password complexity. All right, so make sure you have that, otherwise it will take some time. Okay, so I have set one password, encryption password. I can click on backup now. तो अभी तक का जो मेरा बैकअप है वो आ जाएगा. अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ और लेट्स से कुछ इशू आ रहा है, then I can restore the backup. All right, but yes, of course it will have the downtime for 5 to 10 minutes, you can say. So when अगर आपने लेट से उसको फैक्ट्री रीसेट कर दो, ठीक है, बैकअप तो आपने ऑलरेडी ले लिया. ओके, फैक्ट्री रीसेट किया. Okay, so I will use this first option, download the backup, encrypted backup. Okay, and you can choose the encrypted backup with different password. तो दूसरा पासवर्ड भी देना पड़ेगा, but it's fine. I will use the first one as of now. पहले ये टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला टेस्ट करो. ठीक है, दूसरा वाला आप टेस्ट करके मुझे बताना अगर कुछ इशू आ रहा है. ठीक है, लैब का एक्सेस होगा आपके पास. सो मैंने एक बैकअप ले लिया. अब अभी मेरे पास इफ आई गो
what I have. Let me see how many rules I have on firewall rules and policies, that is under protect. तो protect पे जाना है, firewall rules कितने rules है मेरे पास? 9. Okay, so 9 rules तो है मेरे पास. So I have took the backup. अगर मैं factory reset कर रहा हूँ, then I will not do the factory reset now. अभी let's first focus on the main menu tabs and whatever objects we have discussed yesterday. So आज हम उसको test करेंगे. Let us connect the branch office today with the IPsec VPN for this for today. All right. So next is we have set the backup locally. Okay, locally अगर आप setup करते हो तो आपको manually आके backup लेना है. Okay, अगर आपको automatic backup चाहिए तो आप FTP use करना है, mail use करना है. So what is it in here? Last backup was taken on 12th. Yes, you will know कि last backup कब लिया था. ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा. Even though the backup file will have all the details like कब backup लिया था 12 December. Okay, you will get the time and everything after. ओके, नेमिंग कन्वेंशन जो होता है. ओके, सो जैसे कि आपका ब्रांच ऑफिस का नाम है, फिर आपके जो अप्लायंस की है, ठीक है, जो जहाँ जो फाइल का आपने बैकअप लिया, जिस फाइल का, उसका अप्लायंस की नंबर है, जो मैंने आपको कंट्रोल सेंटर पे बताया था, वही है. उसके बाद कौन सा फर्मवेयर वर्जन है, कौन से डेट पे लिया है, टाइम लिया है, सो आपको पता चलेगा कौन सा ये बैकअप है. और एंड यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर ऑल्सो विच वॉज द लास्ट बैकअप वाज टेकन. Okay, now to restore the backup, you can browse that backup here and it will reboot the firewall. But right now I will not reboot the firewall. It will take around 5 to 10 minutes, and we will restore this backup not in this class, maybe we'll continue tomorrow. All right, so now APIs, we will discuss about APIs. Those who want to जैसे कि बैकअप रिस्टोर करने कोई ऐसी अप्लायंसेस में जो कंपेटेबल नहीं है, तो हम API का यूज करेंगे. पर्टिकुलर बैकअप हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं. दैट इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ API कॉन्फ़िगरेशन. तो हम API के थोड़े एग्जांपल देखेंगे, नॉट टुडे बट यस ऑफ कोर्स इन अपकमिंग मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स के साथ ही जाएंगे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वुड बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट. सो AP आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है. उसके बाद जब इंटीग्रेट हो जाता है API, जो आपका सिस्टम है जो रन करता है API, देन यू कैन use this. Okay, let's say आपको एक configuration export करनी. Alright, so you can do a full export of the configuration or you can do some selective configuration. तो selective configuration में क्या क्या है यहाँ पे? Alright, let's say these are the things. Okay, users हैं आपके पास, आपने users create किए, आपके पास let's say 20 to 50 users हैं, they are created. So you can just type users. Okay, so here are the users. So you can export all the user lists from this firewall. So we'll do that. Okay, so no need to worry now. Next is firmware. So if I click on firmware, you will see दो firmware store होते firewall पे. All right, so we'll see that currently I have one firmware. There is dash. Okay, so if I download if I just scroll down, okay, scroll down karo, then you will see the latest firmware version. Okay, click on new firmware version. If you see the firmware version, latest one, okay, you will find, okay, आपको firmware version number wise ही मिलेंगे, तो आपको idea आ जाएगा कौन सा latest है. Alright, you might see 2 or 3 firmwares listed here, but कैसे पता चलेगा कौन सा latest firmware है? जो सबसे highest number पे होगा वो latest होगा. Alright, and also you can have the release note. You can just click the release note here. You will get the details कौन सा firmware version latest. Alright, so click करेंगे फिर redirect हो जाएगा यहाँ पे. Alright, just open on the new tab, it's fine. But let's say अगर आप जो लोग Sophos Firewall पे काम कर रहे हैं, if you click on new firmware version and you don't find the firmware version, then wait for some time until and unless आप यहाँ पे firmware version नहीं दिखता है. Okay, मैनुअली भी कर सकते हैं. लेट्स से यहाँ पे वो फर्मवेयर नहीं दिख रहा है, बट आपके अकाउंट में जो हमने सोफोस अकाउंट क्रिएट किया है, राइट, जिस अकाउंट से हमने फायरवॉल रजिस्टर किया है, उस पे आपको फर्मवेयर मिल जाएगा. जो भी फर्मवेयर आपको चाहिए आपके डिवाइस के लिए वहाँ पे अवेलेबल होगा. Alright, so we'll log into that and we'll see the firmware version available. But if you see the latest firmware version, then you can click on download. It will download the firmware version. All right, so let's say I click here and the firmware
will start downloading here. Once it is getting downloaded, click on install और firewall boot होगा for 5 to 10 minutes. If you don't have HA, अगर HA नहीं है सिंगल फायरवॉल है आपके पास, then you might have the downtime. अगर आपके पास HA तो आप जीरो डाउन टाइम में भी फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं. ऑलराइट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डाउन टाइम. तो डाउन टाइम क्या होगा, यहाँ जो लोग फर्स्ट टाइम फेल हुआ अगर कोई चेक कर रहा है, just make a continuous ping to your destinations and see if there is a drop or not. All right, so हम देखेंगे failovers भी हैं आगे मॉड्यूल्स पे, we'll see that. All right, so this should not get dropped in your HA configuration. HA high availability, दो फायरवॉल होगा आपके पास, हेड ऑफिस सिंगल फायरवॉल है, दूसरा फायरवॉल जैसे आप इसको बूट करोगे डाउनलोड करते हो. HA में क्या होता है, यहाँ पे आप डाउनलोड करते हो तो दूसरे में पुश हो जाएगा कॉन्फ़िगर फर्मवेयर, फिर वो वाला जो डिवाइस है वो पहले बूट होगा, देन प्राइमरी विल गेट दी बूटेड अप. राइट, एंड वो पूरा प्रोसीजर हम चेक करेंगे, वो तो सेपरेट मॉड्यूल है, बट एज वी आर हियर वी आर डिस्कसिंग. ओके, सो यहाँ पे दो फर्मवेयर आ जाते हैं. यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट फर्मवेयर होगा वो आ जाएगा, जो भी फर्मवेयर पे काम कर रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा करंट जो वर्जन स्टोर्ड है. ओके, नाउ यहाँ पे एक्टिव है. ओके, सो यू जो येलो बटन होगा वो आपका एक्टिव फर्मवेयर होगा, यानी वो फर्मवेयर यहाँ पे रन हो रहा है. ओके, यू कैन मैनेज, यू कैन अपलोड द फर्मवेयर मैनुअली. अगर आपको मैनुअली अब फर्मवेयर अपलोड करना है आप कर सकते हैं, बट इसकी जो फाइल होती है कहाँ से डाउनलोड करनी है, sophos.id.sophos.com में से करना है. ओके, सो आई विल लॉग इन लेटर ऑन, नॉट नाउ, इट्स फाइन. जब हम बैकअप और रिस्टोर करेंगे तब एक बार मैं आपको वहाँ पे लॉग इन करके दिखाते हैं. नाउ पैटर्न अपडेट्स. सो हियर आर द पैटर्न अपडेट्स फॉर द फायरवॉल्स. तो ये ऑटोमेटिक होगा. तो ये किस लिए पैटर्न अपडेट्स यहाँ पे, सो यू कैन सी लास्ट अपडेट कब हुआ था यहाँ पे 12th. ओके, दैट इज टुडे 5:42. ओके, यू कैन क्लिक ऑन अपडेट pattern now. अगर if you find that वो pattern update नहीं हुआ है, simply click here and it will get updated. ओके, सो देखो अभी ये अपडेट हो गया, राइट, फॉर्मवेयर. अभी इसमें कौन से पैटर्न है यहाँ पे, लेट्स गो देयर. सो इट हैज AP फर्मवेयर और उसका वर्जन. ओके, सो लेटेस्ट इज 11.0.21. ये कब काम आएगा, जैसे आपने सोफोस का AP स्विच पे लगाया, ठीक है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा फायरवॉल. ओके, ऑन मैजिक IP 1.2.3.4, वो मैजिक IP है. अगर आप TCP डंप लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वहां से ट्रैफिक आ रहा है. तो क्या होता है, लेट्स से आपका जो AP है उसका पुराना फर्मवेयर है एंड हियर यू हैव द लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन, तो ऑटोमेटिक फायरवॉल ऑलरेडी कंट्रोलर है तो उसको पुश कर देगा फर्मवेयर फ्रॉम द पैटर्न अपडेट्स. ऑलराइट, सिमिलरली एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन का वर्जन है. सो देयर इज अ वर्जन यू विल सी हियर फॉर ATP, also for the antivirus you will see client authentication client, यानी कैप्टिव पोर्टल से जो हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, सिमिलरली क्लाइंट जो होते हैं वो आपके यहाँ पे रहेंगे, वो भी उसका वर्जन आपको यहाँ पे दिखेगा, लास्ट कब अपडेट हुआ है वो यू विल गेट इट. Alright, so GeoIP country DB database. So this is for Ketan, let's say country host group, right? So all the updates will be here. So you don't have to worry about, just you have to use the host. So Geo यहाँ से अपडेट हो जाएगा, इंटरनेट से ये पूरा डेटाबेस क्लाउड, सोफोस का जो क्लाउड है वहां से उसको सिंक कर लेता है. Similarly, IPS signatures, intrusion prevention signatures और application signatures, ये भी आपकी पैटर्न अपडेट्स में से होगा. सो लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. ऑलराइट, एंड ऑल्सो वी हैव वेबसाइट्स. ओके, आप वहाँ पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हो वेबसाइट में, और अपने फाइल पे भी कंपेयर करना है एंड सी वेदर you are running on the latest version. All right, make sure on the firewall, कोई भी firewall हो, latest version पे आप उसको रन करो. एंड yes, of course, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट फर्मवेयर अपडेट करना है. फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन योर टोपोलॉजी and the release note of the firmware version, whether it is any firewall that is available on the market. All right, so Sophos, it is very easy. You don't have to worry much about, just make sure you have the latest firmware version. आप latest firmware में काम कर रहे हो, that is enough. The rest will be taken care by the Sophos Firewall.
सोफोस कनेक्ट, राइट। सो ये कौन सा है? सोफोस कनेक्ट आपका वीपीएन, जो रिमोट यूजर्स के लिए, हम रिमोट यूजर के पीसी पे डाउनलोड करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसको, उसका जो क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं, राइट, उसका वर्जन है यहाँ पे। सो यू विल वेरीफाई, यू विल सी द सक्सेस इफ इट इज गेटिंग फेल्ड। अच्छा, सक्सेस है यहाँ पे, किसी किसी का फेल भी हो जाता है, ओके, तो वो रीजंस फाइंड करेंगे, फिक्स करेंगे कि इट शुड शो सक्सेसफुल अपडेट, latest versions, and it should be have perfect date is fine, I understand, but version जो होता है, ठीक है, वो लेटेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कोई फेल नहीं होना चाहिए, कोई भी जो टेम्प स्टेटस जो होगा वो कोई फेल नहीं होना चाहिए। Okay, if it is getting fail, you can always look here and verify whether the status of this pattern, it should be success only। फेल है तो हम उसको ट्रबल शूट करेंगे। दूसरा है रेड फर्मवेयर। अगर आप, जो मैंने अभी रेड डिवाइस नहीं दिखाया, राइट, लेट मी जस्ट शो यू दैट। इफ आई गो टू द प्रोडक्ट्स, ओके, सोफोस के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इफ यू कैन सी द स्क्रीन। So under network, we have Sophos Firewall, wireless, AP, switch. We have everything, zero-day protection. So yes, this we will discuss also. What is zero-day protection? Let me just go through the red device, right? I think I will be able to see here. Let me click there if I can see the red. Okay, let me compare the models if I can see the models. This is the firewall. Yeah, so ये सारे firewall के models हैं यहाँ पे, XG series, very small devices, okay, small firewall. And we have the medium size and the large scale. All right, so yes, the hardware will be depending on the models. So we have SD Wi-Fi, remote Ethernet devices. All right, so let me click on compare models. Okay, so these are the models available. Let me just go at 20 and 60. These are the red device. Okay, so these are the hardware configuration. So आप इसका hardware compare करके you can purchase this device. This is to connect the branch office or multiple branch office. All right, yeah, for connectivity, secure connectivity. Okay, फिर आप इसका ट्रैफिक हेड ऑफिस से मूव कर सकते हैं, एंड सो ऑन, विल चेक दैट इन अ व्हाइल। ऑलराइट, सो इसका जो फर्मवेयर होगा, राइट, सो इन दैट केस आल्सो firewall, if there is a latest firmware, it will push to the red devices, red firmware, and Sophos antivirus। okay, Sophos जो firewall होगा, ठीक है, उस पे दो एंटीवायरस होंगे, एक Sophos AV, Sophos का ही एंटीवायरस होगा, एक I think this is Avira। Okay, so Avira engine is also integrated with the firewall. So you have two antivirus engines to scan the traffic, दो engines रहेंगे, all right। Then you have SSL client, SSL VPN client भी है हमारे पास, so that is the version running। all right, let's say किसी सिनेरियो में ऐसा होता है, आपके पास firewall पे इंटरनेट नहीं होता है, तो मैनुअली आप अपलोड कर सकते हो the pattern, जो भी latest pattern है, you can manually upload the pattern, so we'll see that also। You can automate the updates, the interval, कौन से interval पे आपको pattern updates पे रखना है, okay, so by default it is 2 hours, so you can set this, the options available here। all right, so this is about the firmware backup. We'll talk about the firmware restoration later on, right? Now coming to the next point, that is the host and services। so देखो यहाँ पे क्या होगा, you have host, okay, so what are IP host, MAC host, FQDN host, जो हमने कल पढ़ा था, राइट, रिवीजन हम कर रहे हैं अभी, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, एंड फाइल पे देख लेते हैं, वी विल नॉट लुक इनटू द थियरी पार्ट नाउ। and yes, country group service। so if you see the first one, okay, so how you can add, you have to click on add, okay, सब जगह आपको add का option मिलेगा, you will see the option to add the host। तो MAC host add करना है, MAC address add करना है, so just simply give the name, all right, let's say Ankit, okay, and here उसका जो MAC address है, okay, so उसका MAC address I will put it here। so this will only create one particular MAC address। अगर आपके पास multiple MAC address list है, so you can just give the name and select the MAC list। okay, you can just put comma करके दूसरा MAC address डालना है,
then comma, then again you have to add the another MAC address. Okay, no space. I think I left the space. Let me see if I'm getting the error or not. Okay, it is taking. So it took. All right, so it took the single. Let me just create the another one, MAC list. And I will put 2 MAC addresses. Okay, let me click on save. तो ये ऑब्जेक्ट जो हमने कल पढ़ा था, राइट, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू फॉर योर कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका स्पीड अप कर देगा कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो आप ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। मोस्टली आपके ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे होंगे? आईपी होस्ट पे रहेंगे। ऑलराइट, अभी आईपी होस्ट में एक बार जाते हैं। ऑलराइट, सो मैंने 2 मैक ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे क्रिएट कर दिए, राइट। कल हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पे हमने दोनों क्रिएट किए। विल सी बोथ। आई थिंक वाई लिस्ट वॉज नॉट क्रिएटेड, लिस्ट नहीं हुआ, 2 मैक एड्रेस आना चाहिए। लेट मी ट्राई बैक, मैक लिस्ट, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, एग्जाम्पल को कॉपी, एंड आई थिंक पेस्ट, एंड लेट मी राइट टेस्ट। ओके, आई कैन गिव कोई भी नाम दे सकते, इट्स फाइन, बट मैक लिस्ट होना चाहिए, यानी एक से ज्यादा मैक। यस, नाउ ओके, आई थिंक डुप्लीकेट मैक था, उसकी वजह से वो नहीं, उसने नहीं लिया। ओके, सो डुप्लीकेट मैक होगा वो एक में हो जाएगा। सो दिस आर द डिफरेंट मैक, दैट इज द रीजन इट टुक। बट हम इसको इफ आई क्लिक ऑन टेस्ट, अभी मैं शायद इसका नाम, लेट मी जस्ट मेक टेस्ट अंडरस्कोर 1 and see if I can make any changes. Okay, for MAC address it is taking. Let me give another name like test 555. I can give any name. Click on save. Okay, so I can, तो क्या कर सकते हैं, जो हमने लास्ट पढ़ा था, we cannot make any changes, right? But yes, of course, जो टाइप है वो डिफॉल्ट ही रहेगा। यानी इस पे जो मैक लिस्ट है, ठीक है, ये मैक लिस्ट है, तो दूसरा मैक एड्रेस यहाँ पे आप आगे जाके ऐड कर सकते हो। ओके, लेट मी जस्ट ट्राई टू ऐड दैट, बट डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। ओके, आई विल चेंज वन अनदर ऑक्टेट। ओके, 0, लेट्स से देयर इज अ 0। ओके, सो इसको अपडेट कर सकते हैं, यस, इसको कर सकते हैं, बट टाइप जो होगा वो नहीं चेंज होगा। तो टाइप कौन सा है, कैसे पता चलेगा टाइप है यहाँ पे? सो इट इज लाइक, लेट मी सी द टाइप हियर, इट इज लिस्ट, ऑल आर लिस्ट, single MAC address. Let me just add one MAC address here and click on save. Let me see. Okay, so it is now type कौन सा है? Address. So जो type है वो चेंज नहीं होगा। So जो मैंने अभी तक क्रिएट किया था वो लिस्ट से क्रिएट किया था, और दूसरा मैंने एक सिंगल MAC एड्रेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑलराइट, सो यस, यू कैन क्लिक ऑन ऐड। अगर बहुत सारी लिस्ट है, यू कैन डायरेक्टली सर्च दैट MAC एड्रेस डायरेक्टली हियर। You can also click on filter here. आप फिल्टर कर सकते हो, let's say contains not contain। ओके, आप इधर आके ऑब्जेक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, ये ट्रबल शूट में या फिर कोई चेंजेस आ रहे हैं, ओके, एट दैट टाइम इफ यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यू कैन फिल्टर इट विद द नेम, और आप एड्रेस मैक एड्रेस इधर डाल के, अगर लिस्ट है बहुत सारी तो आप वो पर्टिकुलर मैक एड्रेस को सर्च करना है, देन यू कैन जस्ट टाइप दैट मैक एड्रेस एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, सो आई थिंक जो भी होगा वो दिख जाएगा। Let me put one MAC address here and click on apply contains, okay, and MAC address. Let me click on apply and I can see जहाँ पे भी वो MAC address था वो मुझे list मिल गई वहाँ पे, right? Okay, so this is your MAC address of सबको ये तो आ गया होगा, right? So next is IP host में जाते हैं and let's see. Now you will see some default objects. So ये आपके default objects होंगे, okay? So यहाँ पे जो ग्रे आउट होगा आपका, ठीक है, फायरवॉल पे जो भी ग्रे आउट देख रहे हो यहाँ पे, वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एडिट इट, बट यस ऑफ कोर्स दिस आर सम अदर ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी कैन एडिट। सो जो टाइप है अगेन, सो दिस इज सिस्टम, ओके, सिस्टम जनरेटेड ऑब्जेक्ट है, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। क्लिक ऑन टाइप, you will get it, so you can just filter it, okay, by clicking this arrow, तो उस हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। Okay, let me keep it to default. So you can again search with name. यहाँ पे आपको फिल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी फिल्टर दिया हुआ है। अगर आपको कोई कुछ सर्च करना है,
ओके लेट्स से 172.16 नेटवर्क अगर है तो मुझे यहाँ तक का जो भी नेटवर्क है ओके वो मुझे देखना है. सो क्लिक ऑन अप्लाई and I will see all the objects. Okay, so if I just scroll, let me just put this down. Okay, yeah. So अभी इसको जब भी आप फिल्टर करो okay, तो make sure you clear it. Otherwise, if you come back here, let's say I go मैंने firewall rule पे गया पहले, ठीक है, और वापस मैं objects पे आता हूँ. Let's see. Let me click on objects. Yes, so filter remove हो गया. Generally, if you can't find that, just remove the filter. यहाँ पे filter enable अगर है तो उसको remove करना पड़ेगा by clearing, making it clear. Sometime maybe the browser की वजह से issue होता है. उसके हिसाब से आपको वो filter हटाना पड़ेगा. All right. So these are the default one. Let's see type. So we have IP address. Okay, देखो यहाँ पे IP address है. ये आपका IP है, means एक single IP है. IP subnet है, that means there is a network here. Okay, एक network configure किया है. And again, I can see some IP address and okay, let's say these are some other IP address. This is created by me. Okay, some are default. So IP range, देखो यहाँ पे IP range भी by default एक create किया हुआ है. So let's click on add. Once you click on add, you will get this template. You can add your host. So give the name like लेट्स से आप आईपी से एक वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहे हो. सो हमारा खुद का नेटवर्क होगा, राइट, और सामने वाला का नेटवर्क होगा. सो लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट दैट इज लोकल LAN. Alright, IP version IP4. Alright, type is not IP. Okay, मैं पूरा नेटवर्क कम्युनिकेट करना चाहता हूँ. सो I will select networks and I will put the local network of this firewall. So it is 16. All right. And subnet is 24. Okay. And click on save. तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. लेट मी क्लिक ऑन ऐड एंड आई विल टाइप रिमोट सबनेट और यू कैन से लैन नेटवर्क, कुछ भी जो भी आपको नाम देने. सो दिस इज रिमोट मीन सामने ब्रांच ऑफिस का नेटवर्क. क्लिक ऑन नेटवर्क. बाय डिफॉल्ट IP वर्जन तो 6 ही है एंड आई कैन क्रिएट 172.16.17.0. ठीक है, ये मेरा ब्रांच ऑफिस का नेटवर्क है. ऑलराइट. सो वहाँ पे जो PC है वो .100 है उसका IP. ऑलराइट, सो विल डू सम टेस्ट कनेक्टिविटी. क्लिक ऑन सेव. सो सिमिलरली अगर देखना है कि कोई सेम नेटवर्क तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं हो गया, तो लेट्स से आई विल जस्ट फिल्टर इट आउट एंड आई विल टाइप 172.16.16. तो जितना भी 16 वाला नेटवर्क है, ओके लेट मी जस्ट टाइप वन मोर 16. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, राइट, एंड दिस वन, दिस आर बोथ आर सेम बिकॉज ओनली नेम इज डिफरेंट. और नाम से तो कुछ करना नहीं, नाम तो मैं फायरवॉल पे यूज करना है, बट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है. जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो और एक यूज करो. हो सकता है आपके में मल्टीपल डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स ऐसे क्रिएट हो जाएंगे. तो क्या करो, फाइन ट्यून के लिए जितने भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एड्रेस में जाके आप सारे जितने भी नेटवर्क्स है उसको वेरीफाई कर लो ऐसे, और जो भी ऐसा लग रहा है डुप्लीकेट है उसको डिलीट करो. और हो सकता है आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हो कहीं पे, तो उसको भी ऑडिट करना पड़ेगा आपको. ऑलराइट, और जितने भी डुप्लीकेट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जितने भी फायर पे डुप्लीकेट सब्जेक्ट्स होते ही हैं जनरली. सो उसको लोड नहीं देना है, तो बेटर है कि जितने भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना के उसको एक एक करके डिलीट करना है. ऑलराइट. अगेन यस ऑफ कोर्स, जब भी हम ये कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहे हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन हम या फिर ऑब्जेक्ट्स भी डिलीट कर रहे हैं, before and after backup must. Backup is always must for any firewall in this world. Sophos पे हम बेस्ट प्रैक्टिस में सब अभी कोर्स तो फायरवॉल Sophos पे, तो मैं ज्यादातर तो Sophos यूज करूंगा. Sophos फायरवॉल में हम बैकअप लेंगे फॉर मेकिंग एनी माइनर और मेजर चेंज. बैकअप लेना मस्ट है. और वी डेफिनेटली वी विल सेट द ऑटोमेटिक बैकअप ऑन द ईमेल टुडे.
विद द जीमेल। ओके, जीमेल पे कर लेते हैं आज। सो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है। ऑलराइट, यू कैन फिल्टर फ्रॉम हियर विद द एड्रेस। नेटवर्क डाल के डालो, या फिर आप नेम से पता है तो नेम से डाला NC। और देखो कौन से चैलेंजेस आते हैं अगर कुछ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अभी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, 2 पेज के तो ऑब्जेक्ट्स आई कैन सी। ऑलराइट, नाउ सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट किए थे, वी विल सी, वी नो दैट हाउ टू क्रिएट IP। सीधा इधर IP डालो और नाम डालो यहाँ पे, लेट्स से जो हमारा AD सर्वर होगा, राइट, AD _server एंड द सर्वर IP। सिमिलरली IP रेंज करना है। ओके, जैसे कि आपके पास 3 सर्वर है, लोड बैलेंसिंग करना है, ठीक है, बाहर से आपने उसको एक्सेस दिया है, तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग जब करते हो तो आप IP रेंज हम ये यूज करेंगे। ओके, तो हम IP रेंज जब हम पोर्ट फॉरवर्डिंग मल्टीपल सर्वर के साथ करेंगे, पहले एक सर्वर के साथ करेंगे, देन वी विल सी हाउ दी लोड बैलेंसिंग वर्क विद पोर्ट फॉरवर्डिंग DNet से। एंड मल्टीपल जो सर्वर होगा, ठीक है, हम उसको अराउंड रोबिन रिक्वेस्ट से हम उसको देखेंगे कैसे हम IP रेंज देके हम उसको लोड बैलेंस कर सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट लोड बैलेंसर, ऑलराइट, बट जो रिक्वेस्ट होती है कैसे हम उसको फॉरवर्ड करेंगे आपके सर्वर्स को, जो भी सर्वर्स होंगे उसको कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो, IP रेंज से होगा। नेटवर्क है और IP लिस्ट, जैसे जो भी लिस्ट IP लिस्ट होगा उसको व्हाइट लिस्ट करना है, ब्लैक लिस्ट करना है, यू कैन डू इट बाय क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई नेटवर्क ग्रुप बना है या फिर IP रेंज बना है एंड आपने नेट IP बनाया है, तो उसको ये सपोज जो कल बताया था ग्रुप्स भी कर सकते हैं। सो यू कैन ग्रुप बना सकते हैं, क्लिक ऑन ऐड। ओके, डिफॉल्ट है ये वाला ऑलवेज। देखो कितने डिफॉल्ट वन है, ये कोई मैंने क्रिएट नहीं किया है। आदि कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगरेशन में बताता हूँ वो, अगर मैं उसको पर्टिकुलर बोलता हूँ वही मैंने क्रिएट किया। रेस्ट बाय डिफॉल्ट आती है फावल पे, यू डोंट हैव टू वरी, यू विल। अगर आप फर्स्ट टाइम लैब भी कर रहे हो तो आपको, जब आप फावल पे पोर्ट A पे PC कनेक्ट करोगे लैब पे, तो ऑटोमेटिक इंटरनेट मिल जाएगा उसको, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फायरवॉल रूल भी होगा और नेट रूल ऑटो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे होता है। ओके, will I have already shown you, but I will go there. Before that, for creating IP group, give the name। और जो हमने IP बनाया है, ठीक है, ये वो लिस्ट आ गई जहाँ पे पता है अभी लोकल बनाया था, रिमोट बनाया था। सो सिमिलरली आप उसको ग्रुप करके उसको फिर यूज कर सकते हो। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक राइट नाउ इट इज नीडेड, बट यस ऑफ कोर्स इन द रियल सिनेरियोज यू विल नीड इट। और वी जब हम प्लान करते हैं नेटवर्क, एट दैट टाइम जो हमारा टोपोलॉजी होगा, सो सारे ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे पहले क्रिएट कर देंगे, कौन कौन से। जैसे अभी मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्योंकि मेरे प्लान के हिसाब से 2 कनेक्टिविटी है, तो उसमें 2 नेटवर्क्स है। फिर अगर मेरा स्टास होता तो मैं और एक AD सर्वर डालता, राइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता। देन आई विल क्रिएट FQDN होस्ट। अगर लेट्स से आई हैव सम क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड के ऊपर जो भी है, ओके, सो उसको मेरे को देना है। ओके, सो इन दैट केस आई विल क्रिएट द FQDN क्या होगा, URLs होगा आपका, जैसे कि facebook.com, Office 365 एंड सो ऑन। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से Office 365, एंड आपको URL आपको फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, एंड यू हैव टू add it here. So let's say www dot, this is not a URL, but I'm just typing one URL, so you can just use this one. Okay, so I will not type W, it's fine, office.com. Okay, so this is one of the URL, so I simply click on add. ओके, कोई ग्रुप पे ये डालना है तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ग्रुप बना सकते हैं। नाउ FQDN जो होस्ट है, राइट, वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ये डिफॉल्ट FQDNs होंगे। ऑलराइट, सो यू कैन इफ यू वांट यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू कैन लीव, इट्स फाइन। 15, आई थिंक 15 पेजेस आर देयर, यू कैन क्लिक एंड यू विल सी विच आर द FQDNs, कौन कौन से ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, ड्रॉप बॉक्स एंड यू कैन सी फेसबुक, गूगल एंड सो ऑन, बट दे आर नॉट इन यूज में नहीं है। अगर आप यहाँ पे रखोगे ये माउस अपना, होवर करोगे, यू विल सी नो सब डोमेन फाउंड, यानी ये रिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि यूज नहीं होगा तो ये आपको यहाँ पे डिटेल नहीं बताएगा। अदरवाइज यू विल सी IP दैट इज गॉट रिजोल्व बाय ड्रॉप बॉक्स, विल सी दैट। ओके, एक FQDN जब टेस्ट करते तब चेक करेंगे।
अगेन ग्रुप बना सकते हो बहुत, अगर आपने 2-3 यूआरएल्स लेके आओ, ठीक है, कोई वेबसाइट है उसको बाईपास करना है, उसकी 5-6 यूआरएल्स है, सो यू हैव क्रिएटेड एफक्यूडीएन होस्ट एंड देन यू हैव ग्रुप इट एंड यू हैव अप्लाइड ऑन द फर्वॉल रूल। कंट्री ग्रुप जो अभी पैटर्न्स बताया था, राइट, वहाँ पे आपका जो जीओआईपी लोकेशंस है, यू कैन गेट दी जीओआईपी लोकेशंस एंड देन उसके ऊपर आप उसको अलाउ या ब्लॉक कर सकते हो। सो दिस आर द डिफॉल्ट, ये सब डिफॉल्ट ही है। जब आप फायरवॉल बूट करोगे, जो लैब पे करोगे, वही सेम चीज आप रियल सिनेरियो में भी देख सकते हो, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी आती है फायरवॉल के साथ। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन अफ्रीका। तो ये देखो यहाँ पे एक नाम डाला हुआ है और सारी अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे एडेड है यहाँ पे। ऑलराइट, सो दिस वे these are the default ones। so अफ्रीका एशिया में होगा तो एशिया इंडिया आ जाएगा इसमें। if you click on Asia, I think yes you will get India here। so continent wise सब है यहाँ पे, सारी कंट्रीज इसके अंदर ही है। you can directly use this or generally we will create our own custom policies। तो ये वर्ड बहुत यूज करेंगे हम, कस्टम पॉलिसीज। कस्टम पॉलिसी यानी दो पॉलिसीज होगी फायरवॉल पे, एक होगी डिफॉल्ट पॉलिसीज, जो भी हम देखते हैं, जो हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया, राइट। आईपी होस्ट में देखा कि वहाँ पे मैक होस्ट में कुछ नहीं था, इट वाज कंप्लीटली एम्प्टी, ये सब मैंने क्रिएट किया। सो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट मैक एड्रेस पॉलिसी या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं था, यहाँ पे डिफॉल्ट है। ओके, सिमिलरली आपको सारे मॉड्यूल्स में से डिफॉल्ट सेटिंग्स तो दिखेगी। ऑलराइट, सो वी विल गो, अभी ये वाला मॉड्यूल जो हमने लास्ट जो कंप्लीट किया उसी हिसाब से जा रहे, तो वहाँ पे नहीं मेंशन था, बट यस ऑफ कोर्स एज वी कैन सी ऑन द GUI वी कैन सी दोस डिफॉल्ट आईपी होस्ट ऑब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं और फायरवॉल के साथ ही आते हैं। और ग्रुप्स आप देख लो डिफॉल्ट कौन कौन से आते हैं। सो सिमिलरली कंट्री ग्रुप वो भी डिफॉल्ट है एंड यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम ऑब्जेक्ट्स। और कस्टम ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स में तो ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, अगर पॉलिसी पे तो पॉलिसी वहाँ पे हम बोलेंगे लेट्स से कस्टम पॉलिसीज और डिफॉल्ट पॉलिसीज। ओके, सो डिफॉल्ट पॉलिसी से देखना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर डिफॉल्ट पॉलिसी नहीं करता है तो देन वी विल क्रिएट आवर ओन पॉलिसीज। और एक चीज होता है क्लोन, यानी उस जो डिफॉल्ट पॉलिसी है या फिर कस्टम पॉलिसी उसका क्लोन कर दिया, यानी डुप्लीकेट कर दिया, फिर उसको हम एडिट करें और उसको हम यूज करेंगे। so this way we will manage the firewall। right, so let's say, so you can give the name, let's say block countries। okay, जो कंट्री को आपको ब्लॉक करना है सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। alright, and then you can apply on the firewall rules। तो वो जो भी कंट्री से अगर ट्रैफिक आ रहा है, हिट हो रहा है फायरवॉल पे, वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, अगर एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट होगा, ड्रॉप किया है तो ड्रॉप होगा, और रिजेक्ट है तो रिजेक्ट होगा। राइट, सो विल सी what is actions in more details like drop। okay, then we have accept and we have reject। ड्रॉप में तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा, राइट, यानी लेट से पिंग करे तो पिंग पिंग नहीं लगेगा। एक्सेप्ट होगा तो पिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट अगर एक्शन है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑलराइट, देन यू कैन टेक द एक्शन, इट्स फाइन। सो दिस इज कंट्री ग्रुप। सो यू वो पैटर्न अपडेट में से आएगा। यस, नाउ सर्विस। सो देखो डिफॉल्ट पॉलिसी, डिफॉल्ट सर्विसेज है इसमें। यस, सो देखो अभी तक मैंने यहाँ पे ये मैंने क्रिएट किया एक policy, but this is the not the default, but it comes with the firewall SMTP 465 port। all right, so सबने हमने पढ़ा है, राइट, DSC। ये देखो यहाँ पे ग्रे आउट है, so you cannot make any changes on this current services। okay, so what are these? okay, the BGP port। okay, अगर आपको पोर्ट नंबर पता है तो you can verify like DSCP UDP है। okay, so it is UDP 6768। ओके, एंड लेट्स से वेल नोन प्रोटोकॉल्स पे जाता है, DNS है, सो इट्स TCP UDP, इट्स UDP एंड TCP बोथ दोनों एडेड है यहाँ पे DNS पे। ओके, सो यू विल गेट प्रोटोकॉल्स, यू विल गेट डिटेल्स कौन कौन से पोर्ट उस पे आपने कॉन्फ़िगर किए। सो HTTPS on 443 TCP 443, GRE we have on 47, then we have H32 for voice। we have all the ports that जो डिफॉल्ट पोर्ट्स है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं फायरवॉल का ये स्टैंडर्ड है। आप कोई भी फायरवॉल पे अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करना है देन दिस आर दी पोर्ट नंबर। ओके, इंटरव्यू में भी ये ऑफ कोर्स ये तो ये तो आने ही आता ही होगा सबको। सो यू नो द पोर्ट नंबर।
ओके, यहाँ से भी हम सीख सकते हैं। एंड दिस आर द आई कीवर्ड, पोर्ट 500, ओके, आईपी सेक के लिए पोर्ट कौन सा है। सो यू कैन क्रिएट योर ओन पोर्ट्स, ओन सर्विस, ये डिफॉल्ट है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पेजेस, आई थिंक 4 पेजेस आर अवेलेबल, एनटीपी पोर्ट्स, IMAP, POP, all the ports are given, ping, okay, type of request. Then we have NTP, we have PPT, POP, IMAP, okay, this we have syslog, talk, and so on. Okay, we'll use it directly, but you can create your own custom port. Let's say आप एक वेबसाइट रन हो रहा है, राइट, यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट तो रन करके रखा हुआ है। सो इफ आई एक्सेस दैट वेबसाइट विद द आईपी, उसका आईपी एड्रेस है 100, जो सिस्टम का ही आईपी है। ओके, तो 172.16.100 एंड इट इज वर्किंग ऑन पोर्ट 8080। ऑलराइट, तो मेरी एक वेबसाइट है, सो इट इज वर्किंग ऑन दिस। अभी मुझे इसको बाहर से एक्सेस करना है। ऑलराइट, आई नीड टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक सर्विस क्रिएट करूंगा, लेट्स से 8080। ओके, एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होगा, जिस पोर्ट पे काम करती है मेरी वेबसाइट, 8080, दैट्स इट, टीसीपी पे काम कर रहा है। अगर कोई यूडीपी पोर्ट काम कर रहा है तो सिलेक्ट यूडीपी, ओके, और जो पोर्ट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो हो सकता है आपका वॉइस भी हो, तो सारे पोर्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। सो इफ इट इज यूडीपी, एंटर द पोर्ट, लेट्स से कोई सिप प्रोटोकॉल है तो 5060 एंड सो ऑन। ओके, अभी तो एक ही वेबसाइट करते हैं, सो आई विल नॉट यूज दैट, एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव। वंस यू क्लिक ऑन सेव, आई थिंक डुप्लीकेट मैसेज आएगा, आई, हाँ, या। So let me click on services, and you can click, or you can just filter that. Okay, let me just search that 8080. Okay, so here it is. So I will get 8080 TCP port. So जब अभी मैं यूज करता हूँ इसको 8080, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डीनेट में यूज करेंगे, बाहर से वेबसाइट एक्सेस करने। अगेन यू कैन ग्रुप दो सर्विसेज, यानी अगर अलग अलग आप लेट्स से क्लिक ऑन ऐड करके देखते हैं, एंड सिलेक्ट सर्विसेज। You can give service for VoIP के जितने प्रोटोकॉल्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से SIP, ओके, तो SIP यू कैन यूज SIP, एंड जो प्रोटोकॉल्स आपको आगे जाके अलाउड या फिर जो भी डिनाई करना है, जो भी एक्शन लेना है, उससे पहले, उस एक्शन लेने से पहले आप एक ग्रुप बना सकते हो, उस ग्रुप पे एक्शन ले सकते हैं। लेट्स से अलाउ और डिनाई और रिजेक्ट, ओके। सो पिंग, लेट्स से पिंग कर सकते हैं, क्लिक ऑन अप्लाई। Okay, once you click here, once you select any protocol, let's say, let me select UDP, okay, default port, I can click on apply. Okay, so these protocols. So this group of protocols, I can take the action, click on save. So it will save that group. All right, so right now I will not create it. It's fine for me, but you can test it if you are doing, if you are test कोई particular आप कोई testing करने वाले हो, तो आप ग्रुप बनाओ एंड देखो। अगर नहीं चलता है, it's working, then also you have to check the packet flows, and if it is not working, then definitely we have to look into the advanced troubleshoot step, with again bring back us to check the packet flow, तो हम देखेंगे। All right, so this is for the objects and services we have discussed last. All right, now let's use these objects in our rules. Okay, so if I go to firewall, let me click on release note first. Okay, वो click किया था, right, जब हम firmware, so you will get the firmware versions details here। जो भी firmware है उसके release note है यहाँ पे, ठीक है। आपको release note गूगल पे सर्च करोगे Sophos release note, you will get redirect to this page, and you can just go through the known issues, previous issue, resolve issues, and so on. So we'll see this not now, as it is not needed right away, everything is working। सो विल सी दैट लेटर ऑन, कौन कौन से अभी भी पेंडिंग इश्यूज है। तो अगर वो वहाँ पे अगर आपका लाइव नेटवर्क चल रहा है, ऑलराइट, सो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस whether you are facing this issue or not on the IPsec and SSL VPN, for example. All right, we will look into the release note, yes, of course, later on. So let
me come to the topology and let's come to the branch office PC. Okay, anyone, any doubt till here, guys? Anyone? No doubt? Okay, we will begin with the next step then. Okay, no worries, you can ask later on then. Okay, and now this is the branch office. So let me just open the firewall. ओके, तो ब्रांच ऑफिस का जो फायरवॉल है वो हम देखते हैं. तो जो पीसी है, ठीक है, उसकी सेटिंग स्टैटिक बेसिकली है. डीएचसीपी भी रन करेंगे यहाँ पे डीएचसीपी नहीं है, सो विल रन दैट डीएचसीपी. नाउ लेट मी जस्ट चेक द सेटिंग ऑफ द पीसी में कौन सी सेटिंग्स है यहाँ पे. सो लेट मी वेट फॉर अ व्हाइल, गेटिंग लोडेड. It's fucking slow. Okay, so we have Ethan, we have Arshad and Rahul, Ritesh, Saikand. Okay. Okay, let me click on the CMD. Okay, so ये सिस्टम का आईपी क्या है? 7.172.16.17.100. Okay, and IP address gateway क्या है? 172.16.17.16. So that is my IP address of the firewall. Let me just access that. Firewall access करते हैं and let's see. If it is slow, then we will go to the same PC which we are working on. So I think here. Okay, let me just do one thing. I will delete it. Okay. Now let me show you one port forwarding step. तो आपको firewall rule कैसे configure करना है, you will know. Right, so simply हम port forwarding करेंगे. So ये जो PC है, ठीक है, उस पे सबसे पहले आपको ये वेबसाइट चलाना है. ये कैसे? I think everyone knows how to run this. Okay, let me show you. Once you run this PC, you can go to control center. Yep. पहले control center में जाना है. Then you have to click on install a program. Okay, stop me in between if you have any queries, doubt or suggestions, guys. Okay, raise your hands or you can just directly speak up, please. All right, so next is you click on turn on the Windows features on and off. Okay. Okay, those who know, it's okay. Those who doesn't know, what you have to do once this box comes up. अगर ये open होता है तो then you have to click on Internet Information Service. Tick here and click on OK. Once you click OK, it will install. You have to wait for 1 or 2 minutes. और जो सिस्टम का IP है, ठीक है, उससे आपको एक्सेस करना है. तो HTTP जो सिस्टम का IP है एंड पोर्ट चेंज करना है तो क्या करेंगे? यू कैन गो टू IIS. इंस्टॉल होने के बाद आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS मैनेजर मिलेगा. ओके, सो यू कैन गो देयर एंड चेंज द पोर्ट. बाय डिफॉल्ट 80 पे काम करेगा. सो आपको फायरवॉल पे देखना है ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है. देन यू कैन चेंज द पोर्ट फ्रॉम 80 to 8080 और एनी पोर्ट, कोई भी पोर्ट यूज करो बट 80 मत यूज करो. ऑलराइट, बिकॉज you will get lot of traffic on port 80. So उसको filter करना
it will be difficult for you, for us, not only you, but yes, of course, for us. It is easy, but not now. हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई वे में करेंगे, देन थोड़ा सा ये मेटी में जाके भी इसको फिल्टर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. We can do anything, but for a safer side and to save our time on the labs, you can change the port. So once you click on, once information manager is open, you have to click on site. You will see default website, click there, and under sites, click on binding, and here you can select the first one. Okay, click on edit. So here by default is 80. So just I have added 8080. That means the port is open. And if it is unassigned, then you can just select the IP address of the system. Okay. Click on OK, close it, and browse it on your browser. If this opens, then only we can forward it to your from outside. बाहर से उसको हम करेंगे. So let me just stop this ping first. It's fine. Now, what would be the next step? और एक step होगा putty open करना है सबसे पहले. All right. Now let's see three-way handshake. All right. So we will see the three-way handshake on the CLI packet capture. All right. Let's see how this works. So I will open putty. दो पुट्टी सेशन आपको ओपन करना है. यू कैन टाइप 172.16.16.16 and click on open. Once you click on open, open another duplicate session here, और एक open करो यहाँ पे, and just enter the password of the firewall. All right, enter the password of firewall. So you will get this detail. Okay, is it fine if I keep this or should I enlarge this? Okay, let me just try change settings, and I think appearance change. Try to save it. Okay, if you know, if you don't know, then let me just show you. So I will keep 20, and what I will do, I will save the logs. All session output or printable output would be fine. And let me save on particular location. Desktop पे save कर लेते हैं. And I will type 3-way handshake. Okay, this is not needed. This is to just show you how 3-way handshake works. And firewall के पास भी हम देखेंगे कैसे पैकेट फ्लो का, राइट? तो पैकेट फ्लो को समझने के लिए ये हम ये कर रहे हैं. So CLI आ गया, right? You have these options. You have to go to option number 4 and type TCP dump and apostrophe port 8080. तो dumps ले रहा हूँ यहाँ पे. अगर कोई भी रिक्वेस्ट 8080 पे आती है, you have to let me know. All right, means the firewall has to let me know. So let me just log in here. And जब पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप ये करना है. ठीक है, दोनों कंसोल एक्सेस ले लो. ओके, नहीं लेना नहीं चलेगा तो भी चलेगा, बट if you want to learn to fix and troubleshoot the issue in case of not working, तो ये आपको स्टेप फॉलो करना है. Okay, so let me just log in the firewall. Now on the you have to select option number 4. What I will do, telnet करूंगा मैं यहाँ पे. किसको telnet करना है? जहाँ पे मेरी वेबसाइट रन हो रही है. तो उसका IP क्या है? First you have to type. Let me just change the settings for this also. Appearance change. Okay, let me make it 20. All right, so telnet 172.16.16.1.100 ये मेरा सर्वर का IP है. सर्वर है PC whatever. So my PC is working as a server. कौन से पोर्ट पे मेरी वेबसाइट काम कर रही है? 443. अभी मैं कौन से पोर्ट पे चला रहा हूँ? 8080. Let's say simply press enter. If you find this connected, that means your port is open. अभी देखो फ्लो कैसे होगा यहाँ पे.
Let me just come here. Let me just zoom it. और एक बार टेल वापस करते हैं. लेट्स से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं. क्लिक. और what can you do? You can just differentiate करने के लिए you can just add some lines and जो आपका दूसरा ये था उस पे हम वापस टेलनेट करते हैं. Okay, so let me just these are the finished packets, so let me just put another line. Okay, and let me just go to this CLI और telnet करते हैं वापस. ठीक है, telnet IP address 8080, press enter. That's it. So you can see, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. पोर्ट ए से आपका यस पोर्ट ए आउट, यानी फायरवॉल ने रिक्वेस्ट भेजा किसको, सर्वर को. ऑलराइट, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ योर फायरवॉल, सो दिस इज द सोर्स आईपी. ओके, मैं फायरवॉल से कर रहा हूँ इसलिए सोर्स आईपी है. ऑलराइट, सो फ्रॉम पोर्ट ए it is sending the request on random ports. This is the random port number. Now this is the interface, this is ingress, ठीक है, the out traffic is going out, and the time. All right, time, seconds and milliseconds and so on. Interface out, IP address, my firewall IP. Okay, random port. Now firewall is doing telnet किया, right? हमने 172.16.1600 on port 80. कौन सा फ्लैग लेके जा रहा है, सीन. ऑलराइट, तो 3 बैंड चेक कैसे होता है, सीन सिनेक्ट एक्ट, राइट. सो यस, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हम जो अगर नहीं पता है तो हम एंड ऑफ द कोर्स जितनी भी टेक्नोलॉजी हम गो थ्रू करेंगे. हमें तो सिर्फ वर्किंग देखना है, वर्किंग देख रहे हैं यहाँ पे. But if you want to discuss like 3-way check in more detail, that would be a different part again. So we will discuss that. But we can see flag scene packet लेके जा रहा है, right? And it is taking many other details for the first packet. Okay, like MSS. So it has a 1460 MSS value and so on. So we have sequence number and window sizing options and so on. So this is your part of your for the 3-way handshake first packet. This is your first packet going out from your firewall. तो ये कर रहा है. Then packet, now you can see the port in, यानी packet in आ रहा है. Packet वापिस पहले बाहर गया firewall से, then it is coming back from the system. So what is now source? Source क्या है, यानी 100 है मेरा, right? वहां से request आ रही है. Again it is seen act, so it got acknowledged that yes, I have received your request, and then again act. So this is your act request. तो आपका हो गया 3-way handshake. यहाँ पे ये हो गया locally. अगर आपका ये locally चलता है, that means it will work from your LAN network. All right, now we will verify from outside. बाहर से भी देखेंगे. This is generally what happens that क्या issue, ये क्यों चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे. पहले तो देखते हैं पैकेट फ्लो कैसे हो रहा है. रिक्वेस्ट बाहर भेजी, फिर वापस रिक्वेस्ट अंदर आई, सोर्स आईपी लेके आया, राइट, पोर्ट 8080 से मेरे फायरवॉल की तरफ. तो उसको टेलनेट मिल गया. जो यहाँ पे टेलनेट का मेरा कनेक्टेड स्टेटस था, राइट. सो आई गॉट दैट टेलनेट कनेक्टेड टू माय सर्वर सिनेक्ट, एंड फायरवॉल ने उसको एक्नॉलेज कर दिया, यस आई हैव रिसीव योर एक्नॉलेजमेंट. सो for what, for port 80, that port 80 is open from your end, or I can reach the port. तो अगर देखो अब अभी इसमें अगर मैं लेट्स से विंडोज में जाता हूँ यहाँ पे. ओके, लेट मी टाइप firewall. Let me type firewall. If I can see the firewall settings, these are the Windows firewall. Let me just go there, and what I will do, currently the local firewall is disabled on this system, right? So you can see it is disabled. So what I will do, let me just turn it on. All right, so let me turn on, click on OK. Now what we'll do, firewall is on right now, right? If I go to my browser,
And if I access the website, let me access the website first that is running on the server with the local IP address. Okay, local IP address है मेरा, ठीक है. So we know what is private IP and the public IP. यानी अभी मैं private IP से access कर रहा हूँ firewall जो मेरा website है, right? So it would be like colon 4444, so sorry, it is firewall, right? 808. Okay, I might be audible now. Okay, so I'm accessing the website right now. It is working. But let me just go and verify from the firewall whether I'm able to do telnet. Okay, so I think you can see it's showing me trying. All right, now let's check the packet capture. So what is happening here now? Let me just do one thing. I will put a line to differentiate this packet, previous packet, दूसरे packets, नए वाले packets को हम differentiate करते हैं, उसके लिए line डालना है. And what I will do, let me tell it again. So I can see result of the telnet from the firewall से मैं telnet कर रहा हूँ, ठीक है. जब मैं port forwarding कर रहा हूँ तो मैं basic check कर रहा हूँ कि मैं telnet कर पाता हूँ कि नहीं. Alright, so here currently is saying timeout. क्यों? क्योंकि अभी पता है firewall जो local firewall है उसको वो block कर रहा है. Okay, but still I can access the on the browser because it is allowed for that. But here देखो अभी out request जा रहा है, firewall उसको out, कोई in packet आ ही नहीं रहा है. We are sending SYN request. We are not getting SYN-ACK request or ACK request. जैसे ऊपर 3-way handshake complete हो रहा था. This is the complete 3-way handshake, right? See. So we are getting service request out and request in, and 3-way handshake is getting completed. But here you can see the packet is going out. यानी firewall packet बाहर तो भेज रहा है, but जो सामने वाला जो IP है, okay, जो remote IP वो respond नहीं कर रहा है. It is not responding. So this way जो आपका 3-way हैंश होगा, इन और आउट पैकेट्स होंगे, 3-way हैंश होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि सामने जो आपका नेबर होगा वो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं. ओके, सो दिस विल हेल्प यू टू, दिस इज द ट्रबल शूटिंग स्टेप एज वेल. अगर कोई वेबसाइट नहीं चल रही है आपकी, ठीक है, लेट्स से आपने फेसबुक एक्सेस किया और फेसबुक नहीं चल रहा है, तो व्हाट यू विल सी दिस सेम थिंग, 3-way हैंडशेक, राइट. 3-way हैंडशेक देखेंगे हम. You will see the packet in and out from port B, जो port B पे हमारा इंटरनेट है, राइट. तो हम वहां से इन आउट देखेंगे कि इन आउट हो रहा है कि नहीं है, TCP हैंडशेक कंप्लीट होता है कि नहीं. यू कैन चेक एंड वेरीफाई. इफ यू सी कि पोर्ट बी से आउट ही हो रहा है, रिक्वेस्ट इन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ISP ने वो पर्टिकुलर वेबसाइट ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर पर्टिकुलर पोर्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है. देन वी कैन आइडेंटिफाई एज पर द पैकेट कैप्चर दैट whether the firewall is sending the request or dropping the request. अगर let's say ऐसा नहीं कि ISP से भी इशू हो सकता है, firewall से भी इशू. So how we can identify कि firewall के साथ इशू है कि नहीं. So let me check drop packet. So जैसे TCP dump लिया, right? TCP dump कमांड था, right? मैंने पोर्ट नंबर पे लिया. So similarly you can take the drop packets. So drop packets कैसे लेंगे? Let me type DR tab टॉप पैकेट कैप्चर एंड पोर्ट पे हम डम्प्स लेंगे. ऑलराइट, मैं अभी पोर्ट पे ले रहा हूँ, होस्ट पे भी ले सकते हैं. और मैं आपको ये कमांड्स शेयर करूंगा, बहुत सारे कमांड्स है, हाउ वी कैन फिल्टर दी पैकेट, कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं होस्ट बेस, नेटवर्क बेस, या फिर कोई पर्टिकुलर है कोई सर्विस है उसके ऊपर कैसे पर्टिकुलर पैकेट्स कैसे चेक करना है, ट्रबल शूटिंग इश्यू. मैं उसके अलग से आपको नोट्स पे शेयर करता हूँ. बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी द पैकेट फ्लो. इफ आई enter and check the drop packet capture, okay, और मैं यहाँ पे telnet करता हूँ. alright, let's me do telnet again from the CLI. अगर मैं CLI करता हूँ और यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं मिल रहा है, देखो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, that means firewall कुछ ड्रॉप नहीं कर रहा है. Obviously यहाँ पे तो हमारे पास actually we have the proof that the firewall, local firewall of the server is dropping the traffic, not the Sophos firewall. अगर यहाँ पे firewall ड्रॉप करेगा तो आपको डिटेल्स मिलेगी कौन से रीजन से ब्लॉक हो रहा है, जैसे कि फायरवॉल रूल नहीं मिल रहा है या फिर नेट रूल नहीं मिल रहा है या फिर आपने कोई ऐसी पॉलिसी लगाई है जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो रहा है.
तो हमें उसकी आईडी सब मिलेगा एंड देन वी कैन गो टू दैट पॉलिसी एंड एडिट दैट पॉलिसी और उसको हम अलाउड कर सकते हैं एंड वी कैन हैव द फ्लो। ऑलराइट, सो ऐसे हम ट्रबल शूट करेंगे। सो टीसीपी डंप एंड ड्रॉप पैकेट्स, टीसीपी डंप देखना है और ड्रॉप पैकेट देखना है सीएलआई से और जीयूआई से भी देखना है। ऑलराइट, सो जीयूआई से भी देखेंगे। ऑलराइट, तो हम कर रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर, अभी हम करेंगे बाहर से एक्सेस इसको, यानी लेट्स से इफ आई गो टू माय टोपोलॉजी, ओके, एंड दिस इज द आप यू आर सिटिंग एट होम, ओके लेट्स से, एंड दिस इज योर ऑफिस और यहाँ पे एक सर्वर है आपका। यू वांट टू एक्सेस दैट सर्वर फ्रॉम आउटसाइड, सेम सर्वर जो अभी हमने वेबसाइट एक्सेस किया था, राइट, उसको हमें एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो अभी एक चीज बता देता हूँ उससे पहले, हम यहाँ पे मेरे दो आईएसपीज हैं, और ISP1 ISP2, ओके, सो आई विल डू विद दी पोर्ट बी। ओके, तो ये जो राउटर है उसका पब्लिक आईपी क्या है वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि फाइवल से पोर्ट रीचेबल है। सबसे पहले टास्क क्या था, मैंने जो चेक किया वो कि पोर्ट टेलनेट होता है कि नहीं, तो होना चाहिए टेलनेट, अदरवाइज ऑलवेज देयर इज अ इशू फ्रॉम माइट विद द लोकल फाइवल दैट इज, जो अलाउड नहीं कर रहे कलेक्शन। तो हमेशा जो हमने CLI से टेलनेट किया था, राइट, अभी ये वाले में, सो आपको सिर्फ टेलनेट करना है यहाँ पे। सो यू शुड नॉट गेट दिस मैसेज रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगर ये टाइम आउट कर रहे हैं यानी आप टेलनेट कर रहे हो, दैट मीन्स पोर्ट क्लोज है। कहाँ से, सर्वर एंड से। यू हैव टू ओपन दैट पोर्ट फर्स्ट एंड देन यू कैन डू टेलनेट। अगर आपने ओपन कर दिया तो यहाँ पे कनेक्ट आ जाएगा। वेरीफाई कैसे करेंगे, पैकेट कैप्चर से 3 वे एंड चेक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ऑलराइट, सो यू कैन सी विद हेल्प ऑफ 3 वे एंड चेक। सो ये पहले लोकली चेक करना है। ऑलराइट, यहाँ से टेलनेट करोगे तो हो ही जाएगा पीसी से, बट हमें फायरवॉल से टेलनेट करना है और CLI से करना है। ऑलराइट, now let me just go to the ISP router and I will show you why I'm going to ISP. ये ISP का router है, so I will go to that ISP router here and let me just connect. All right, let me just all right, so enable and show IP interface. Now जो मेरा पब्लिक आईपी है, ठीक है, वो कौन सा है, ये वाला है 192.168.1.101। ऑलराइट, यू कैन रिमेम्बर दिस। सो दिस इज द आईपी, यानी जो मेरा फायरवॉल तो नेटेड डिवाइस है और एक जो ISP है वो भी एक नेटेड डिवाइस है, यहाँ से मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी अगर मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग करता हूँ देन आई हैव टू डू पोर्ट फॉरवर्डिंग हियर, बिकॉज जो मेरा पब्लिक आईपी है, दिस इज माय पब्लिक आईपी एंड दिस इज माय प्राइवेट आईपी। एक्चुअली दोनों प्राइवेट ही है, बट लैब पे टेस्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी आर डिफरेंट। okay, you will see some other class range, this is the same class range, so don't get confused. alright, तो हम सिर्फ टेस्ट लैब पे टेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हम इसको पब्लिक प्राइवेट डिफाइन कर रहे हैं। alright, so जो ISP है उसका पब्लिक आईपी है वो कौन से रेंज में, 1 रेंज पे। alright, और जो फायरवॉल पे है वो 98 पे। alright, यहाँ से इंटरनेट आ रहा है, यहाँ से कनेक्टेड है। और मैंने क्या किया हुआ है, शो रन, इफ आई जस्ट शो यू द शो रन कमांड। ओके, सो मैंने व्हाट आई डिड पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो मैंने यहाँ से भी पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सो हियर इट इज, ओके, सो दिस इज द कमांड। तो मैंने जो फायरवॉल है, मेरा फायरवॉल का आईपी क्या है, 192.168.98.2, वो मेरा फायरवॉल का आईपी है, वैन आईपी है। और मैंने 8080 वहाँ से भी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, दोनों साइड से मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये नेटेड डिवाइस है। ऑलराइट, I will show you this configuration, but you don't have to worry now. Let's say आपके पास डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस है, ये तो जनरली ISP का जो राउटर होता है वो ISP ही कंट्रोल करते हैं। सो अगर आपको कोई पोर्ट फॉरवर्ड करना है, अगर कोई ब्लॉक है पर्टिकुलर पोर्ट, देन यू हैव टू टेल देम टू जस्ट फॉरवर्ड द पोर्ट, दे विल बी डूइंग फॉर यू। अगर आप मैनेज कर रहे हो देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ डूइंग द पोर्ट फॉरवर्डिंग फ्रॉम योर ISP राउटर, अगर आप मैनेज कर रहे हो, अदरवाइज इट इज फाइन। पर लैब पे तो हम करेंगे, नो वरीज। सो आइडिया आएगा कि फायरवॉल से इशू है, ISP से इशू है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो अभी फायरवॉल पे आते हैं, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। सो वहाँ पे मैंने पब्लिक आईपी आपको बताया। नाउ लेट मी जस्ट गो टू दी फायरवॉल। ऑलराइट, सो ऑफिस, let me just go to network and show you some settings. ओके, तो जो मेरा सर्वर है, ठीक है, वो कहाँ पे कनेक्टेड, पोर्ट ए पे कनेक्टेड है। उसका आईपी क्या है, 172.16.16.100।
फायरवॉल का आईपी है 16 एंड जो मेरा पब्लिक आईपी है वो ये रहा, राइट। मैं जूम करता हूँ इसको। या सो पोर्ट ए पे है 172.16.16 फायरवॉल का आईपी अगेन, एंड सिस्टम 100 है, राइट। 172.16.16.100 जो कनेक्टेड है। पोर्ट बी पे मेरा पब्लिक आईपी है, और राइट पब्लिक आईपी जो मैंने अभी राउटर पे बताया था, राइट 68.2, वो मेरा पब्लिक आईपी है फायरवॉल पे। यानी जो अपस्ट्रीम राउटर है उस पे पब्लिक आईपी है, और इसमें भी इसके लिए पब्लिक आईपी, इसका जो पब्लिक आईपी ये रहेगा, और इसके ऊपर और एक राउटर है, राइट, ये राउटर है यहाँ पे। तो यहाँ का जो पब्लिक आईपी है यहाँ ये रहेगा, ओके, दैट इज 1.101, एंड यहाँ पे है 98.2, 1 and 2। ओके, सो हियर इट इज। तो गेटवे रहा, वेट फॉर अ मिनट गाइस। Sorry, we have Air Force nearby, so sorry for that. Okay, so next is, this is my ISP2। ओके, जो ISP2 लिखा हो मेरे एक्चुअली पोर्ट बी पे यहाँ पे, वी विल चेंज दिस, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेमिंग कन्वेंशन, बट यस, फॉर अ बेटर टोपोलॉजी अच्छे से प्लान करना है। बट हियर पोर्ट बी पे लेते हैं, बोले पोर्ट बी पे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, यानी यहाँ का जो ये पीसी है, ये जो वेबसाइट हमने एक्सेस किया था वो हम दूसरे यानी होम पीसी पे एक्सेस करेंगे, यानी बाहर से। राइट, सो लेट मी जस्ट बिगिन विद दैट। सो दो टाइप के मैनुअल है, और वी कैन कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली और वी कैन कॉन्फ़िगर मैन्युअली। ओके, सो टुडे वी विल कॉन्फ़िगर इट ऑटोमेटिकली, और पैकेट फ्लो देखते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट यू टू डू फॉर पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट कैसे फॉरवर्ड करना है, यानी आपका जो लोकल सर्वर है वो बाहर कैसे एक्सेस करना है। यू हैव टू गो टू प्रोटेक्ट, रूल्स एंड पॉलिसीज, फायरवॉल रूल्स, ऐड ऑन फायरवॉल रूल्स। तो आपका सबसे पहला फायरवॉल रूल आज हम ऐड कर लेते हैं, ऑलराइट। एंड देन दो ऑप्शंस होंगे, ऐड न्यू फायरवॉल रूल्स एंड सर्वर एक्सेस असिस्टेंट, डीनेट। ओके, सो दिस इज योर पोर्ट फॉरवर्डिंग हेल्प असिस्टेंस। ओके, सो डायरेक्टली यू कैन कॉन्फिगर, क्लिक ऑन दैट, और वहाँ पे आपको डायरेक्टली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सो इंटरनल सर्वर आईपी एड्रेस आपको देना है। सो यू हैव टू सिलेक्ट द इंटरनल आईपी एड्रेस, यू कैन सिलेक्ट द सर्वर आईपी, राइट। यू कैन, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट तो शायद नहीं किया, राइट, नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ पे आ नहीं रहे, बट डायरेक्टली यू कैन, यस ऑफ कोर्स, आप यहाँ पे इनलाइन भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जस्ट टाइप द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर, वो इनलाइन ही क्रिएट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, सो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है जब मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप किया था। ऑलराइट, सो आई विल यूज दैट सेम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। So internal IP address, specify the private IP address of your internal server to access from internet, यानी बाहर से। Okay, click on next. Now next is public IP आपको select करना है, जो आपका public IP होगा, जो आपके WAN interface पे होगा। You have to select that one. Okay, so I have B and D both. So I will go with the B first. B से हमें port forwarding करना है। Then you can click on next. कौन से पोर्ट फॉरवर्ड करना है आपको, राइट। सो विच सर्विसेज यू टू फॉरवर्ड, HTTP, HTTPS, SMTP। ओके, सो जो भी डिफॉल्ट पोर्ट्स देखे थे ना सर्विस पे, वही यहाँ पे लिस्टेड है। प्लस मैंने जो कस्टम सर्विस क्रिएट किया था, राइट, हाँ, वो भी मैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। तो पहले हमेशा जो भी पोर्ट्स पे जो काम कर रहा है आपका वेबसाइट, वो हमेशा पहले सर्विस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विस में जाके क्रिएट करना है, क्योंकि हम सर्विस जो है वो यहाँ से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। इफ़ यू सी ऐड न्यू आइटम्स, तो शायद आप सिलेक्ट ही कर सकते हो। आई कैन नॉट सी द ऑप्शन टू ऐड, यहाँ से ऐड नहीं कर सकता। सो मैंने पहले ही ऐड कर लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज में, एंड देन मुझे यहाँ पे लिस्ट पे मिला है, एंड आई एम सिलेक्टिंग दैट वन। ऑलराइट, नाउ लेट मी जस्ट अप्लाई, ओके, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो एक्सटर्नल सोर्स कौन से जो नेटवर्क है या फिर डिवाइसेस है जिनको ये राइट से एक्सेस करने के लिए, अभी के लिए कोई भी, एनी वन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट यू कैन क्लिक ऑन आइटम्स, और जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो पब्लिक आईपी, लेट्स से लेट मी सी इफ आई कैन सी द कंट्री वाइज। लेट्स से ऑस्ट्रेलिया है। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री ही एक्सेस कर पाएगा, सो यू टू सिलेक्ट ऑस्ट्रेलिया। रेस्ट
इट विल गेट ड्रॉप, और जो भी आपने कस्टम पॉलिसीज क्रिएट की होगी वही एक्सेस कर पाएंगे। लिस्ट ऑफ आईपीज या फिर ग्रुप ऑफ आईपीज जो आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे वही लोग बाहर से एक्सेस कर पाएंगे। बाकी सब जो सिलेक्ट नहीं किया है वो ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, लेट्स से इंडिया, तो इंडिया के लोग ही एक्सेस कर पाएंगे। ऑलराइट, सो आई विल ट्रबल शूट के लिए एनी रखो पहले, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो एग्जिस्टिंग रूल को, फिर पर्टिकुलर कंट्रीज या ग्रुप ऑफ आईपीज उसको आप अलाउड कर सकते हो। ओके, उसी को ही अलाउड करना है, बहुत पर्टिकुलर। सो दिस विल बी द रिव्यू ऑफ योर सिलेक्शन। जब सेव करते तब डी नेट रूल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं इसके, ठीक है। यानी नेट रूल्स, जो नेट रूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज रूल्स। बट यस ऑफ कोर्स हम उसको गो थ्रू तो करेंगे क्योंकि हम मैनुअली भी क्रिएट करेंगे, राइट। तो हमने क्या सिलेक्ट किया कि जो सर्वर है उसका आईपी 100 है, ऑलराइट, उसका नाम ये है। ओके, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है उसका नाम सोफोस ने ही रख दिया, इंटरनल सर्वर। जो बाहर से आईपी एक्सेस होगा वो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा, ऑलराइट। Okay, so this is actually private IP in the lab, पर आपका in the real scenarios you will have the public IP। कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस पोर्ट पे वो आपने फॉरवर्ड किया हुआ है, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, इट इज एनी, और आपके ये 3 रूल्स ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे। ओके, सो it will create 3 net rules। okay, so one is dnet rule, one is loopback rule, और एक रिफ्लेक्सिव रूल होगा। ओके, लेट्स से लैन पे है। ओके, तो लैन व्हेन एन टू लैन, आई थिंक लेट मी जस्ट टेक अ पेन। ओके, सो एक होगा लैन टू वैन, ओके, एक होगा वैन टू लैन, दैट इज योर डीनेट रूल। ओके, लैन से वैन ट्रैफिक जाएगा आपका यहाँ पे, और एक होगा लैन टू लैन यानी इंटरनली। इंटरनली पब्लिक एड्रेस से भी तो एक्सेस कराना है, राइट, प्राइवेट आईपी से नहीं करना है। सो आई एम सो सॉरी, इट्स लैन टू लैन। ओके, 3 रूल ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे, नेट रूल्स। दिस इज योर नेट रूल्स, तो हम वो देखते हैं अभी। सो दिस विल बी योर नेट रूल्स। ये वाला रूल बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है और आपके लैन पे सर्वर पे उसको एक्सेस करना है, ऑलराइट। फिर ये जो लैन टू लैन रूल है, अगर आपके लैन यूजर ही आपका सर्वर एक्सेस कर रहे हैं पब्लिक आईपी से, तो आपका वो लैन टू लैन रूल आएगा काम में। ओके, अगर आपका सर्वर को इंटरनेट चाहिए तो सर्वर का लैन टू लैन रूल होगा, ऑलराइट। सो कौन सा है वो रूल यहाँ पे देखो, इनबाउंड यानी वैन टू लैन, ये वाला, दिस वन, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, and this is your third, ये third है, alright। So these 3 rules will be get created। Okay, just have a look on this। So inbound, just a bit, okay। So we have inbound net dnet route from outside to inside, that is from public IP, that is from WAN zone to LAN zone. Then we have outbound rule, masquerade, for that is from your internal server. Okay, reflexive rule, that is called reflexive rule। Okay, no worries if you don't remember it right now। A reflexive rule, that is from LAN to WAN rule। in short, ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, LAN से WAN की तरफ जाएगा। जो इनबाउंड होगा वो आपका WAN से LAN की तरफ आएगा। और लूप बैक कौन सा होगा, इंटरनल यूजर्स जो LAN पे ही है, ठीक है, वो प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं करेंगे। कौन से आईपी से एक्सेस करेंगे, जो आपका पब्लिक आईपी है उससे लूप बैक से उसका ट्रैफिक जाएगा, उस रूल से ट्रैफिक जाएगा। हम वेरीफाई भी करेंगे अभी कि उसी रूल से ट्रैफिक जा रहा है, ऑलराइट। Okay, then also we have service rule for any, that is fine। So rule are added from top on the table। Okay, default top to bottom approach होता है फायरवॉल रूल्स का। जितने भी फायरवॉल रूल्स और नेट रूल्स होते हैं वो कैसे चेक करते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है, मॉड्यूल्स में आएगा, डोंट वरी। सो टॉप टू बॉटम का मतलब ये रूल्स टॉप पे ही हमेशा ऐड होता है, तो कुछ इशू ना है। ओके, फॉर जस्ट मैनेजिंग दोस रूल। सो बाय डिफॉल्ट वो टॉप पे रखेगा। ओके, क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश, तो ऑटोमेटिक वो रूल क्रिएट कर देगा। Let me just rub this। Now wait for a while to get it saved। And meanwhile what I will do, अभी ये home user है, और
we are sitting outside of the premises. Okay, so we have one user. So 123 is the password. Okay, let it get on. Meanwhile, let me just go to that PC. Okay, so DNET rule हो गया. तो ये वाला rule create हो चुका है. All right. Port forwarding is done automatically. Just we have selected the IP addresses. Okay, क्या select किया हमने? Server का IP address select किया, public IP address select किया और port number select किया. Automatic हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया. ओके, स्कैन हम बाद में करते हैं, इसको आईपीएस से पॉलिसी बाद में लगाते हैं, पहले हम राउट करते हैं. So routing is most important part, right? So we will do the routing. So this is the DNET rule that is created. Okay, so that is from WAN to LAN. Open करते हैं इसको, चलो. So let's see, name automatic आ गया, right? You can उसको कोई ग्रुप में डालना है, ग्रुप में डाल देंगे, but अभी let's keep as it is. Action, इट इज एक्सेप्ट, ड्रॉप क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ड्रॉप करना है, रिजेक्ट करना है. एक्सेप्ट करोगे तो ये सब कुछ बाहर से अलाउड होगा, ड्रॉप करोगे तो सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा. ओके, ऑलराइट. So let me log the traffic for this. All right, and this is WAN to LAN. पोर्ट बी पे ट्रैफिक जा रहा है, पोर्ट 8080 के लिए सारे डिवाइस बाहर से एक्सेस कर सकते हैं. ओके, और बाद में दूसरी सिक्योरिटी पॉलिसी बाद में डालते हैं. राइट, क्लिक ऑन सेव. ओके, एक अपडेट किया है. हमेशा जो फायरवॉल रूल्स होगा उसका लॉग्स देख सेव करना है. देन यू हैव टू मेक श्योर लॉग्स फायरवॉल ट्रैफिक शुड बी enabled on the firewall rule. Now let's look into net rules. So automatically 3 rules was created, right? 3 net rules create हो चुके हैं यहाँ पे. Okay, so reflexive rule यानी LAN to WAN rule, loop back LAN to LAN rule and WAN to LAN rule, 3 रूल यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं. सो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा. अगर इंटरनल LAN पे यूजर्स वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं जो आपका सर्वर है पब्लिक आईपी से, तो ट्रैफिक ये वाले रूल से जाएगा. अगर सर्वर ही इंटरनेट एक्सेस कर रहा है आपका, ठीक है, सर्वर से आप कुछ सर्वर पे ब्राउजर ओपन कर दिया जहाँ पे वेबसाइट रन है, तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा. और बाहर से कोई आ रहा है तो ये वाला नेट रूल यूज करेगा. सो वी विल discuss this net rule tomorrow. Okay, so right now we will not make any changes on this, and let's go to PC and check whether the website is working or not. So open the browser. और जो पब्लिक आईपी है पता है इसका, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो पब्लिक आईपी है, दैट इज 192.168.1.101 वो आईपी, राइट. सो उस आईपी से एक्सेस करते हैं. सर्वर का आईपी क्या है 172.16.1600, बट पब्लिक आईपी क्या है 192.168.1.101. या, सो लेट मी ट्राई इफ आई कैन एक्सेस. अगर नहीं चलता है तो ये सब कोर्स देखो यहाँ पे हम ट्रबल शूट करेंगे. विल सी द फ्लो, दिस विल हेल्प. अगर नहीं चलता है तो ज़्यादा लर्न करेंगे एक्चुअली वो in that case. So let me just type the IP address. Okay, press enter. Let's see. Okay, so 101, I think public IP is 101. Yeah, I think I done with the port B. Site cannot be reached. Okay, so it's not working. Why? Because if you remember, let me do the basic one. I think the firewall is blocking, right? मैंने वो firewall on किया था, right? PC पे तो ब्लॉक कर रहा था, टेलनेट हो रहा था, उसकी वजह से वो अलाउड नहीं कर रहे हैं. सो टुमारो व्हाट वी विल डू, tomorrow we will enable we will disable the firewall on the server. Okay, let's do it because we will be ending the session after some time. Anyone has any doubt till now here? Say yes, just pick it up. Okay, let me just do it quickly if I can. Firewall might be open. Okay, anyone has any query, doubt, you can just unmute yourself and say. Okay, meanwhile I'm turning off the firewall.
Okay, Ritesh, how many are present here? Ketan is here, 7. Okay, you can learn 3-way and check on here also. Okay, so in 5 minutes, we will be ending the session. But yes, of course, if you have any query doubt till now, let me know. Tomorrow we will continue. So, okay, so I can see the firewall is on. That's the reason the port is not working. Okay, the port will block कर रहा है, so I just turned it off. पहला स्टेप मैंने बताया था राइट कि सोफोस से ही टेलनेट करो, अगर टेलनेट होता है तो ही बाहर से चलेगा, तो यहाँ से तो नहीं चल रहा, उसलिए क्यों, क्योंकि फायरवॉल यहाँ पे लोकली ऑन है, उसको वो ब्लॉक कर रहा है, सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट वर्किंग। ओके, तो बाहर से अभी नाउ आई एम एबल टू एक्सेस। कल हम क्या करेंगे, पैकेट फ्लो देखेंगे। ओके, जैसे कि हमारे पास तो सर्वर का एक्सेस नहीं होगा राइट, कभी कभी हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि पोर्ट कहाँ से क्लोज है। सो पैकेट फ्लो से देखेंगे कि कहाँ से वो पोर्ट एग्जैक्टली क्लोज है, सर्वर एंड से है, आईएसपी एंड से है, फायरवॉल के एंड से, कहाँ से वो ब्लॉक कर रहा है। ऑलराइट, ओके, एनीवन, any doubt till now here? No, sir. Sir, but when we'll get a document and that lab access? Ketan, just give me a moment. Wait. Yes, sir. Hello. Yeah, Ketan, you can speak now. Yes, sir. Yeah. When we'll get this the document and the lab access? If you have not received, then okay. Allow me time till tomorrow. Tomorrow you might get received the documents and the labs. Okay, no problem, sir. You have Yes. not received the lab access. No, I did not get any lab access. I did not get any documents, sir. Okay, by tomorrow, I will contact the team and I will try my best to get you as soon as possible. All right. No problem, sir. Okay, sir. Thank you. Do you have any doubt till now here? Anything, Ketan? No, sir. Rahul? Yeah. Yes, Ketan, go on. Don't have any doubt, sir. Okay. Okay, we will provide you the lab access and the documents. And what about Rahul, Ritesh? Everything going fine? Srikanth? Yes, sir. Fine, sir. ओके, सो मैनेजमेंट आपने देख लिया होगा राइट। मैनेजमेंट मीन्स आप जब भी फायरवॉल पहली बार एक्सेस कर रहे हो तो लैपटॉप डायरेक्ट पोर्ट ऐप पे लगा के आप फायरवॉल का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, लैब पे भी सेम टेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, और मैनेजमेंट पोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो सारे मॉड्यूल्स जो हार्डवेयर डिवाइसेस है वो तो एक अलग सेपरेट मॉड्यूल है हमारा, जिसमें हम सारे जितने भी स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल के जितने भी फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल है, and we'll discuss those things. All right. We still have 3 minutes. Anyone has any doubt? Adishat, I think, yeah. Can you hear? Are you there? Rahul? Srikanth?